So in the subject of ethics, we will read the syllabus. Okay, first of all, before starting anything, okay, if you don't understand anything, then first open the syllabus. Okay, कौन कौन पढ़ियार अच्छे, then आम अप्रोच है कि एग्जाम को किमिति हमें क्रैक करिवे. Okay, sadly एथिक्स रो सब्जेक्ट तुमको 100% एथिकल बने देबो जे सेटा जरूरी नुह, किंतु एथिक्स जो सब्जेक्ट तुमको निश्चित रूपे गोटे what is right and what is wrong रो गोटे तुम डायरेक्शन दे देबो कि this is right and this is wrong. ए राइट को अचीव करिया पई तुम कोन करिया पई पड़िबो, ए रॉन्ग को अचीव करिया पई तुम कोन करिया पई पड़िबो, सेइटा तुम एथिक्स रो बते देबो. क्लियर? Now, today's session रे आमे बुझिबा कि एथिक्स जो सब्जेक्ट रहला ताकू आमे काहे की पढिबा. आगु नथिला एथिक्स सब्जेक्ट सिविल सर्विसेज तो यूपीएससी कंडक्ट करे, सेतिर एथिक्स गोटे सब्जेक्ट ही नथिला. सेतिर कोन थिला, जनरल स्टडीज थिला आ ऑप्शनल थिला. परे परे से ऑप्शनल गोटे कर देले, दीटा ऑप्शनल थिले, सिंगल ऑप्शनल करले. तापरे गोटी ऑप्शनल करले, गोटी ऑप्शनल परे से कोन करले जनरल स्टडीज को चारटा जनरल स्टडीज कर देले, जोटा कि लेवल प्लेइंग फील्ड अधिका परिबो समस्त पाइका. ओके, आ सेइथिरे एथिक्स रो गोटे पेपर इंक्लूड करले, जो पेपरटा बाकी पेपर भलिया 250 मार्क केवल गोटी पेपर हबो. या माने कोड ना कोडी जो कमीशन अछि आ जो हम डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओके अच्छे हमरो एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल जो डिपार्टमेंट अछि जेटा प्राइम मिनिस्टर अंडर के थाए, ताकू लागिला कि ना हम गोटे स्पेशल सब्जेक्ट बाहा करिया दरकार एथिक्स ऊपर. ओके, कहया पई गले सब जनरल स्टडीज रो एप्लीकेशन तो एमती 100% होनी हमर सिविल सर्विसेज रे. सिमिलरली एथिक्स रो भी 100% एप्लीकेशन हे न पारे, बट दिस इज अ सब्जेक्ट जहार कि एवरी डे जरा हमको रिलेवेंट लागियो. सिविल सर्विस सर्वेंट हे गला परे तुमको जदी को जिंस रो जीएस रो किबा ऑप्शनल रो कहार एप्लीकेशन हो न हो, किंतु एथिक्स गोटे सब्जेक्ट तार एप्लीकेशन 100% में लागियो. काहे कि इन एवरी डिसीजन ओके गोटे डिसीजन मेकिंग रे यू विल हैव मेनी चॉइसेस. ह्यूमन बीइंग हमको चॉइसेस अधिक अधिक रहबो. यस, जेते चॉइसेस रहबो सेते भलो. गुड गवर्नेंस हमरो कहूची कि व्हेन यू हैव मल्टीपल चॉइसेस देन एटा सब बेले हमरो पॉजिटिव गवर्नेंस हबो. काहे ना लोगन पारे चॉइसेस अधिक रहबो, they can choose which is better for them, they can avail better services. okay, तो public service delivery रो गोटे optimum level हबो जेते बेले पर चॉइसेस बढ़िबो. but when you have many choices you need to choose one path. गोटे पाथ ही चूज करिया पे पड़िबो. जदी in that case गोटे proper public servant केमिति चूज करिबो which is right and which is wrong, जेते बेले सबुडा काम देखा जाए, ठीक रास्ता देखा जाए. तो ethics help us in the subject. This subject will help us to choose the right and wrong. हमको ठीक और भूल चूज करिया हमको हेल्प करे सब्जेक्ट. बुझ पाछो? It helps us to choose what is right and what is wrong. So out of many choices we have a number of choices in our career. We'll face different situations. So choices को type रखो. So choices केमती हो, it may be your individual जोड़ा कि तमो निज्जो को नहीं कि it should be related to your individuality or within yourself. तमो निज्जो को नहीं कि choices ही पारे. Or you have to choose something which is related to your family or your society or your community or your office which is in profession. So there are different levels of choices you will face. So तुमको different level, individual level ले choose करिया पे पड़ी पारे, गोटे family level ले choose करिया पे पड़ी पारे, गोटे society level ले choose करिया पे पड़ी पारे, तुम्हारा office रे तुम्हारा professional level ले you may get to choose, and in professional level you may get to choose something. There are various choices you will face. Now the subject of ethics will help you to choose something, and those choices will be based on
द वेरी सब्जेक्ट जोटा कि हम सिलेबस को देखिले बुझी परिबा कि ए जिंस गुडा को गोटे सिविल सर्वेंट को दरकार पड़े कि गोटे पर्सन को दरकार पड़े से जिनसर आधार रे से चूज कर परिबो। तो बेसिकली हमर जो यूपीएससी एग्जाम करूचे और एथिक्स रो क्वेश्चन पेपर दोचे से क्वेश्चन पेपर रे किछिटा तम क्वेश्चंस ताउचे व्हिच आर थियोरेटिकल इन नेचर। इट इज बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग एंड इट्स योर अपॉन योर कोर वैल्यूज। तमे थियोरेटिकल तो एक्सप्लेन करबो ओके आ ताको डिफरेंट एंगल रे तमे लिखियो आंसर ता नॉट जस्ट कि तमे गोटे एंगल खाली पचारला व्हाट आर द डायमेंशन डिफरेंट गोटे देला गोटे कंपनी अच्छे ओके कॉर्पोरेशन अच्छे से कॉर्पोरेशन रे ओके से किछि तुम दबो गोटे सिंपल जिंस कहबो व्हाट इज कॉर्पोरेट एथिक्स छडो केस छड दियो व्हाट इज कॉर्पोरेट एथिक्स बोली पचारला ओके एंड व्हाट आर द issues they are facing, ethical issues they are facing day by day or in their everyday life, and how they can be ethical. যদি এমতি গোটে সিম্পল কোশ্চেন ହେଲା then you should write ki what is corporate ethics মানে কোন গোটে কর্পোরেট রে এথিক্স র কোন আবশ্যক রহিছি ঠিক আছে these are the different areas where a corporate ethics come into play. बुझ पारछ कोन कोची गोटे कॉर्पोरेट अछि कंपनी अछि जे कंपनी रे तुम चेयरमैन अछ किबा कंपनी रे किछिटा लोक अछन जो माने काम करछंती हला आ कंपनी रो गोटे किछि प्रोडक्ट अछि से कंपनी किछि रेगुलरली प्रोडक्शन करूची तार किछिरा कंज्यूमर्स अछंती कस्टमर्स अछंती तार किते क्लाइंट्स अछंती से कंपनी गोटे एंटिटी ये गोटे बड़ एंटिटी तमर रहला ओके से भितरे each and every person they are bounded by some ethical chain समस्त गोटे चेन रे बाइंड ही रहिछंती परस्पर सहित ओके दे हैव सम एथिकल जदी कहबा गोटे इनविजिबल ओके इनविजिबल चेन अछि जोटा कि एथिक्स रे बंधा आइछि। नाउ देयर आर मेनी केसेस देयर आर मेनी सिचुएशंस ओके सिचुएशन विल बी द राइट वर्ड तो से सिचुएशन रे समस्त को फेस करिया पे पड़ो सम पॉजिटिव सिचुएशन नेगेटिव सिचुएशन ये वो नाउ एवरीबॉडी हैव सम चॉइसेस व्हाट टू डू okay especially in the part of the corporate they need to take decisions every day decisions upon their employees decision upon their stakeholders different stakeholders like their products or decision upon the product the value the quality of product the pricing of product everything they need to use ethics. Suppose a company which produced a certain good take for example computer manufacturing company okay while taking the decision okay what standard of computer you have to manufacture ethics comes to play when they decide what should be the tools we will use to manufacture such computers again कौन tool choose करिया हमें again ethics is important ethics comes into play and when the company has to choose what should be the pricing of the computer again ethics सेठी पड़े आसो not just that से कंपनी रे किछि एम्प्लॉइज अछंती से एम्प्लॉइज मानन को केते सैलरी देबा दरकार ओके प्रति एम्प्लॉय मानू कौन काम केते काम दवा दरकार तांगा वर्किंग आवर केते रहिबो ओके गोटे गोटे टीम रे केते जण मेंबर रहिबा दरकार टीम रो लीडर कागु बनवा दरकार को पोजीशन रे को पर्सन को रखिया दरकार से पोजीशन रे जो पर्सन को रखा जिवो ता भीतर को पैरामीटर को कैरेक्टर्स रहबा दरकार व्हाट शुड बी द on which parameter we should choose a person in that managerial level किबा supervisory level किबा director level there are many such decisions hundreds of decisions तंग न अपन पड़े गोटे कंपनी जे चलाए सो से सब जिस रे आसीबो ethics into play ethics जो से जगह रे okay by the help of ethics he will decide all those decisions. कंज्यूमर हमको ए प्रोडक्ट रो एडवर्टाइजमेंट केमिति करियार अछि ए प्रोडक्ट रो मार्केटिंग केमिति करियार अछि ए प्रोडक्ट को जगह रे सेल करिया पड़िबो ए प्रोडक्ट ऊपर कोन लेवल लगेबा कोन कॉस्ट दबा
there is a caution on every देखिथिबो किछि कंज्यूम जेटा डायरेक्टली कंज्यूम करछे फूड प्रोडक्ट्स हे गला कि मेडिसिन्स हे गला से ऊपर लिखाइ था वार्निंग लिखाइ था तुम देखिछो केबे कफ सिरप हैव यू टेकन कफ सिरप किबा कोनसी मेडिसिन किबा कोनसी प्रोटीन पाउडर किबा किछि गोटे कंज्यूम करियन छ ता ऊपर हमर गोटे वार्निंग लिखाइ था दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ एथिक्स ता ऊपर हमर प्राइसिंग लिखाइ था ता ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखाइ था ता ऊपर एक्सपायरी डेट लिखाइ था यस और नो ये सब these are the part of ethics they need to decide कि आप exactly हमें कौन लिखिबा यार एक्सपायरी डेट केते मेंशन करिबा एला ए प्रोडक्ट को हमें कोड सेल करिबा व्हाट शुड बी द टारगेट एज और टारगेट कंज्यूमर फॉर दिस प्रोडक्ट लिखाइ थाय कि आको 14 वर्ष रो कम पिला या 12 वर्ष रो कम पिला को एटा दूर रखिबे लिखाइ थाय ना अवॉइड सपोज मोडे I have an Amritanjan. Okay. Manufactured by. There is a name of a manufacturer. Okay. It लिखा है price. Okay. There is a price label written here. Okay. तुम देखी पारतो टिके के तुम पारतो देखो price लिखा है तापरे manufacturing date लिखा है तापरे expiry date लिखा है तापरे इंडिकेशंस लिखाई छै ओके दोस इंडिकेशंस कोन पाई छै केवल हेडेक और बॉडी पाई कॉजन लिखाई छै डू नॉट अप्लाई ऑन ब्रोकन स्किन जोठी तमरो किछ इरिटेशन है स्किन ऊपर सेठी अप्लाई करनी बोली लिखा छै ओके और भी लिखा है डायरेक्शंस फॉर यूज ओके अवॉइड कांटेक्ट विथ आईज एंड नॉस्ट्रिल्स डू नॉट यूज इफ एलर्जिक to ingredients then lekha the direction for use apply on affected parts and gently massage close the cap tightly after every use okay storage ro question diya so everything kete ml ro achi kon lekha achi so this is a part of ethics to matlab cigarette ro packet dekcho cigarette ro packet however consuming cigarette and any type of alcohol these are harmful for health kintu to lekha hai ହେଲା it kills it causes cancer केबे देखिছো ता ऊपर पूरा लिखा है it causes cancer so it means these are the part of ethics से सब लेखा न होला हबो निकी हबो सेल्टा हबो अच्छा लेखा हेले भी लोग कंज्यूम करचंती yes or no but that is on the part of company that is on the part of company कि now they decided कि ताको कौन कौन तो पर मेंशन करिया दरकार कौन क्वेश्चन रखिया दरकार बिफोर सेलिंग एनीथिंग ताहले कंपनी रे काम कोन गोटे कंपनी बनछि काहे बनछि की कहबो व्हाई कंपनी इज मेड कंपनी काहे बनछि समझते सॉरी प्रॉफिट पे बनछि आ कोन पे केवल प्रॉफिट पे कंपनी बनछि कंपनी काहे बनछि सर्विस पे यस टू सर्व हला दिस इज द डिफरेंस हला तो कंपनी रो स्थापना हेची गोटे सर्विस दवा पे किबा गोटे प्रोडक्ट दवा पे ओके टू मेक लाइफ इजियर गोटे पर्सन किछ लोकंगर कम्युनिटी रो लाइफ को इजी करे पे कंपनी बनाय थाए ना कि केवल प्रॉफिट जनरेट करे पे बट यस विदाउट प्रॉफिट कैन ए कंपनी रन बिना प्रॉफिट रे कंपनी चली परिबो नो अच्छा काहे चली परिबोनी माने सर्विस दवा पे भी ताको जहा दरकार से सब रो भी कॉस्ट अछि माने सी हमन फ्री देले भी सी जोडो आनछि ताको पैसा पड़छि कंपनी कंज्यूमर को सिना दे परिबो सर्व कर परिबो बट तार तो एम्प्लॉय अछि ना बट कंपनी केवल तो जणे नाही कंपनी रे बहुत सारा एम्प्लॉयज अछंती चिंता करो कंपनी 5000 10000 20000 एम्प्लॉय थांती टाटा वाला कंपनी लाख्स ऑफ एम्प्लॉयज इट अछंती अच्छा खाली एम्प्लॉय अछन ना से एम्प्लॉय मानको फैमिली भी अछंती से एम्प्लॉय मानको पिला अछन तांकर स्त्री अछन तांकर घर अछ पेरेंट्स अछन तांकर चली गोटे इकोनॉमी चली ओके तो से फैमिली का ऊपर डिपेंड ए पर्सन नाउ जनरेट अर्निंग फ्रॉम दैट कंपनी एंड दैट कंपनी अर्निंग फ्रॉम सेलिंग और गिविंग services to its end users or customers so company ro second motto hela to generate profit to earn profit or to serve first to serve people second was to earn profit okay it has some responsibility towards का प्रति responsibility अछि को कंपनी का प्रति responsibility first responsibility towards your customers or consumers secondly को समझ पार्टिसिपेट करा secondly towards your their
कंट्री कंट्री रा टिके पर आसो तापर आसो तांगा एम्प्लॉइज ओके देन आसो सोसाइटी and of course towards their country the nation okay nation in large or state जो state रचे state प्रति भी तरह किछटा रोची कर्तव्य ओके कंट्री प्रति भी कर्तव्य रोची ओके ताको हम सब डिवाइड करिया जदी हमें आहुरी ब्रेक करि परिबा इट्स जस्ट कंपनी गोटे एग्जांपल देली सिमिलरली तमे जे कोनोसी जिंस उठेबो गोटे पब्लिक हो प्राइवेट हो एवरीथिंग हैज सम responsibility roles and some decision to make जा द्वारा कि सेमाने निज को निज जस्टिफाई करूछंती कि निज एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करूछंती बुझिला ना हो आमे काई पढिया आमो कोन दरकार ओके एथिक्स आमे काई पढिबा वी आर द एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट्स आमे सिविल सर्वेंट हमारा एस्पिरेंट्स वी आर एस्पायरिंग टू बिकम सिविल सर्वेंट और पब्लिक सर्वेंट्स लिखै परिया सिविल सर्वेंट्स आर द पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट माने स्टार्टिंग फ्रॉम तमरो जो झाड़ू मारतंदी बाहर किंबा तमरो जो पियन्स अछि ऑफिस रे ए समस्त गुड आरंभ करिकि द टॉप मोस्ट लेवल जो हमरो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ए समस्त पब्लिक सर्वेंट बोली कहि परिया बुझ पालो सन पब्लिक सर्वेंट बोली कहि परिया सिविल सर्वेंट माने ए जो एग्जीक्यूटिव पाई हम प्रिपेयर कर गोटे पर्टिकुलर पोजीशन पाई ना इट इज अ टॉप पोजीशन पाई प्रिपेयर करछंती ओके मु कहते गोटे लो लेवल ब्यूरोक्रेट बोली हम गोटे ब्यूरोक्रेट गोटे लो लेवल ब्यूरोक्रेट पाई प्रिपेयर करछंती जो ओएएस एग्जाम पाई प्रिपेयर करछंती किबा ओडिसा सिविल सर्विस पाई प्रिपेयर करछंती वी आर प्रिपेयरिंग फॉर ए लोअर लेवल ब्यूरोक्रेसी मीडियम लेवल ब्यूरोक्रेसी को माने जो माने यूपीएससी एग्जाम दोचंदी कि ओएस पे ओपीएससी एग्जाम जो माने प्रमोट हेगी गोटे लेवल को जाचंदी से माने होजने मीडियम लेवल ब्यूरोक्रेट और मीडियम लेवल सिविल सर्वेंट्स और हाई लेवल को माने जो माने यूपीएससी रो भी 10-15 वर्ष पार करके सेक्रेटरी लेवल डायरेक्टर लेवल जो माने अछंती कमिश्नर लेवल जो माने अछंती हला चीफ सेक्रेटरी तो बहुत सब हाईएस्ट टॉप मोस्ट सिविल सर्वेंट्स दे आर हाई लेवल ब्यूरोक्रेट्स हला जॉइंट सेक्रेटरी के ऊपर जीवो देयर इज अ हायरार्की जो माने पब्लिक सर्वेंट पब्लिक सर्विस के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढुचंती किबा एथिक्स एंड पब्लिक सर्विस रे होइत आसीबो हम ताकू भी देखिता हायरार्की देखिबा तो 2000 हम गोटे लो लेवल ब्यूरोक्रेसी में पढुचंती से लो लेवल इटसेल्फ इज हायर देन मेनी पब्लिक ऑफिशियल्स गोटे तमे पोजीशन को जीवो दिन तम तळे निहाती रूपे 20-30 जण एम्प्लॉइज तम तळे रहि मे बी रहि पारंती निश्चय हेबे खाली एम्प्लॉइज न हो तम तळे बहुत सारा रेवेन्यू इंस्पेक्टर तम गोटे एडिशनल तहसीलदार हला तो से एरिया जति की से तहसील रे जति की आरआई रेवेन्यू सर्कल्स अछंती सब रेवेन्यू इंस्पेक्टर विल रिपोर्ट यू तुमको रिपोर्ट करिवे तांको तले पुनी अमीन अछंती पियन्स अछंती सब अछंती तो मिनिमम 20-30-40 जण तुमको रिपोर्ट करिवे सेठी ओके तो इट इज अ रिस्पांसिबल पोजीशन ओके व्हाई इट इज अ रिस्पांसिबल पोजीशन इनडायरेक्टली तमे का पय काम करछो गोटे सिविल सर्वेंट हे गला पर फॉर व्हाट यू विल वर्क तमे कोथि पे काम करिवो यू विल वर्क फॉर गवर्नमेंट ओके सो गवर्नमेंट तारा कहा गवर्नमेंट सेटा पब्लिक है तो हमको सब मन रखा दरकार जो भी सर्विस को हमें जाऊे से सर्विसटा होचे इट इज टू सर्व पीपल टू सर्व द वेरी पीपल हम सराउंडिंग जो जो लोक मान देखुचंती से मान को सर्व करिया होचे हमर कर्तव्य ना कि गवर्नमेंट को सर्व करिया ये को सर्व करिया वो को सर्व करिया दैट इज लास्ट तेरे परे आसीबो फर्स्ट होचंती हमर पीपल ए जो गवर्नमेंट अछि से गवर्नमेंट को माने इलेक्ट करचंती को माने चूज करचंती दिस पीपल okay so you are a servant of this people this should be the basic ethics हम कहते हम देखते प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कहते आई एम नॉट अ प्रधानमंत्री से कौन कहते गोटे वर्ड यूज करंती जन सेवक से वर्ड यूज करन सब बळे हैव यू हर्ड दैट स्पीच मैं प्रधानमंत्री नहीं मैं प्रधान सेवक हूं से कहते हैं आई एम द प्राइम सर्वेंट से कहते ना सो कौन कहूछ से तुम कटि जाउछ से कहते मु प्रधान सेवक बोली कहते तुम स्पीच रे सुनिथिबो तो दिस इज एथिकल टर्म हला मु एटा प्रधानमंत्री नुह मु प्रधान सेवक जेतेबेले तुम जडे सेटा भाबी जेतेबेले काम करिवो देन इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू दैट तुम ठीक भाबे काम करछ ओके तो हमें एथिक्स पढ़िबा रीजन हला हमें डे टू डे लाइफ रे बहुत सारा हमें चॉइसेस
फेस करछन बहुत सारा डिसीजंस नवा पई बहुत डिलेमा फेस करिया डिलेमा माने कुछ करछो व्हेन यू हैव टू चॉइसेस और मेनी चॉइसेस तो गोटे जो चूज करे तो डिलेमा मतलब कह जाय एथिकल डिलेमा से वाट बारंबार आसीबो तम पाखरे बहुत सारा पावर्स भी रहिबो रेस्पोंसिबिलिटी रहिबो पावर्स रहिबो जेतो तुम सर्व करछो जेतो तुम खुलम खुला सेवा करि परिबो सेवा करिया पई पावर दिया छै पावर एटा पई दिया हिनी कि तमे निजरो डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके निज पाई निज बेनिफिट पाई यूज करिवो पावर दिया है कोन पाई कि लोक मानको सेवा करिया पई किछटा इंडिपेंडेंट पावर दिया है तुम पाखे को टाइप रो पावर दिया है फर्स्ट होची मॉनेटरी पावर सेकंड होची तमरो डिस्क्रिशनरी पावर किछ तुम पा डिस्क्रिशन भी रहउची ओके और थर्ड होची तुम पाखे डिसीजन मेकिंग पावर होची ए भला किछ पावर थाय तुम भितरे ओके और से पावर को तमे यूज करिवो कोथि पई पब्लिक सर्विस पे यूज करिवो गोटे पब्लिक सर्वेंट से पावर को पब्लिक सर्विस पे यूज करिवो अल्टीमेट मन रखया फीड कर दे माइंड सिविल सर्वेंट हला माने अल्टीमेट गोल द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव रहला पब्लिक सर्वेंट पब्लिक सर्विस बुझ परला पब्लिक सर्विस शुड बी द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नाउ जहां भी डिसीजन नबो सेटा पे नेबे कि पब्लिक रो वेलफेयर कोठी हेबो पब्लिक रो बेनिफिट कोठी हेबो पब्लिक रो बेनिफिट और वेलफेयर जो होचे the decision each and every decision should be depend upon that in ethics हमर जो दिया है जो सब्जेक्ट it consists of 250 marks आमे जो आगु सेशन करबा से सेशन रे डिटेल देखिबा कि हम एथिक्स रे कोन पढिबा ओके ताको आज देखिदबा कि कोन अच्छे सिलेबस रे तापरे हम देखिबा से भितर को जीवा कि एग्जैक्टली ता माने कोन ता डेफिनेशंस माने कोन वी हर्ड द वर्ड ऑफ तुम सुनिचो द वर्ड्स लाइक एटीट्यूड हैव यू हर्ड द वर्ड्स लाइक एटीट्यूड ता एटीट्यूड खराब हैव यू हर्ड द वर्ड लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस सुनिचो इंटेलिजेंस नाउ इमोशनल इंटेलिजेंस यू माइट हैव हर्ड द वर्ड ऑनेस्टी इंटेग्रिटी प्रोबिटी तमे एटा भी सुनथिबो कि वैल्यूज मोरल आ तमे एप्टीट्यूड बोली वर्ड सुनथिबो तो तमे सी सेट एग्जाम दोछंती त हम बोचो एप्टीट्यूड कोछ ना कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट सीएटी कॉमन और एप्टीट्यूड और प्रॉब्लम सॉल्विंग बोली ता कहू तो ए भीतर डिफरेंस कोन यार एग्जैक्ट मीनिंग कोन या डेफिनेशन पढिबा पुनी यार कैटेगरीज कोन होचे व्हाट आर द टाइप्स बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स ओके बेस्ड ऑन डिफरेंट यार पुनी काम कोन ए जो मु कहली एटीट्यूड कोन एप्टीट्यूड कोन इमोशनल इंटेलिजेंस कोन ओके यार पुनी तांगर डिफरेंसेस कोन इथरे हम कोन पढिबा ताकू पढिबा ओके ता सहित हम और भी पढिबा the most interesting is some ethical philosophers ethical thinkers those are the philosophers or some philosophers who have given some philosophies और ताको philosophy रो आधार रे हम ethics को बनै चंती ताको philosophy रो आधार रे ही हम ethics को बनै चंती से फिलोसोफर मान को पढिबा डेरा पुनी ठीक की भूल ओके मे बी तम पय जो ठीक हेतिबो वो तो मो पय से ठीक हेनथिबो मो पय जो ठीक हेतिबो मो पय आउ का पय से ठीक हेनथिबो ओके तो ठीक भूल विचार करिया पय कि देयर आर मिलियंस ऑफ व्यूज आउ दोस व्यूज कैन बी जस्टिफाइड थ्रू दिस फिलोसोफर्स फिलोसफी तुम सुनिथिबो इंडिया इंडिपेंडेंस हवा पूर्वरु देयर वर फ्यू कॉन्फ्लिक्ट्स इन आइडियाज और आइडियोलॉजीज Have you heard about the execution of Bhagat Singh? तुम सुनचे भगत सिंह का execution विषय in history, Indian history, have you heard about the execution of Bhagat Singh? थम रे जणा मला हाथ उठ के जणा ओके तुम्हें एक्सप्लेन करू था Have you heard about his ideological conflict with महात्मा गांधी जी और महात्मा गांधी जी को opinions होतला जो ideas थिला which was contrasted which was against the ideas of Bhagat Singh सुनिचो आ तुम एटा भी सुनिचो they both are leaders they both are freedom fighters they both are patriots
ଶୁଣିଛୁ ସମସ୍ତେ they both were patriots, they both had the same intention to see India a कौन इंडिया को गोटे इंडिपेंडेंट कंट्री भाव से देखिया ପାଇଁ ଚାହୁଥିଲେ yes or no तो तांकर ऑब्जेक्टिव सेम थिला बट सेम ऑब्जेक्टिव अचीव करिया ପାଇଁ का they have different tools, they have different instrument to achieve their objectives. Okay, से भगत सिंह चाहूले इंडिपेंडेंस अचीव करिया ପାଇଁ to take some steps, strong step ना अपन देखते भावुले सबले से कहते कि it is our right and we will snatch it. We should not wait for further exploitation. Whereas Gandhi ji कहते आहुरी patience is important. We cannot be violent at any cost. Gandhi ji कहते कि we have to tolerance विषय से कहते he chose the weapon of non-violence. Okay, so same objective by different paths, different ideologies, different philosophies. Gandhi ji was inspired, सुनी जो कहा द्वारा inspired थे गांधी जी inspired from whom? Gokhale was his political guru. He was inspired from the philosophies of Marx. Tolstoy. Okay, so Tolstoy fan मन से साउथ अफ्रीका थिला बळे हला ए सो फैक्ट बोले जानिया अब भगत सिंह was inspired from preliminary आस्तिला HSR रे inspired from Lenin okay और Mazzini. So revolutionary leaders माने रशिया थिले जर्मनी थिले से मानकु से इंस्पायर थिले नो दैट समस्त इंस्पायर होंती. सिमिलरली मुझे नहीं पचारिबी काली इंडिया खेलला का से तो साउथ अफ्रीका से तो ओके ए पर्सन हिट सेंचुरी के सेंचुरी करला काली हु हिट द सेंचुरी यस्टरडे क्रिकेट के फॉलो करनो केही फॉलो करनो क्रिकेट सौम्य कोहली हिट द सेंचुरी ओके काली तो मेनी पीपल फॉलो कोहली एज देयर आइडियल है फॉलो करंती हीरो है फॉलो करंती ओके हीरो वर्शिप हम कंट्री सेलिब्रिटी मानन को और फेवरेट प्लेयर हिसाब रे फॉलो करंती फ्यू लाइक हिज प्लेइंग स्टाइल फ्यू लाइक हिज एज ए पर्सन और मेनी पीपल दे लव रोहित शर्मा many people like MS Dhoni so people have different choices but समस्त चाहते इंडिया जीतू बोलिका yes or no एटा हो जे तांकर निजर इनर कंसाइंस तांकर इंडिविजुअलिटी और इंडिविजुअल एथिक्स जो एथिक्स र पैरामीटर रे दे आर चूजिंग ए पर्सन आ कोट ना कोटी तम चॉइसेस तमर लाइक्स तमर डिसलाइक्स टेलिंग अबाउट यू इट इज टेलिंग अबाउट यू जे देखिबो बादशाह और सिंगर अच्छे बादशाह और हनी सिंह सुनिचो तांकर फैंस देखिबो तांको भीतर कॉमनलिटी तुम पाइबो रैपिंग रो फैन जो माने तांको भीतर टी कॉमनलिटी तुम पाइबो इन देयर बिहेवियर्स किछरे सिंगर सोनू निगम तुम सुनिचो हैव यू हर्ड सोनू निगम तांको भी सुनिथिबो केबे तार जो फैंस अछंती तांको भीतर किछरे कॉमनलिटी पाइबो आ तमर कॉमन से देखिबो सेटा कोठ ना कोठी गोटे पर्टिकुलर रीजन रे बिलोंग करथाय पारंती गोटे पर्टिकुलर बैकग्राउंड तांको भीतर कॉमन बैकग्राउंड भी थिबो हैव यू एवर ऑब्जर्व तांको भीतर बैकग्राउंड कॉमन बैकग्राउंड थिबो तांकर बिहेवियर रे तांकर एनवायरनमेंट रे तांकर परिवेश तांकर फैमिली रे तांकर कल्चर रे तांकर रीजन जो रीजन रो सम बिलोंग करंती सेठी एरो इन्फ्लुएंस थिबो आउ जोडा कि कनेक्ट करि पड़से लोक संगरे शुणिचो गोटे पर्टिकुलर लोकर मिथुन चक्रवर्ती गोटे फिल्म एक्टर रशिया रे तार बहुत फैंस जानचो मिथुन चक्रवर्ती बहुत फैन रशिया रे छंती ये जो गीत थिला जिमी जिमी इज अ वर्ल्ड फेमस रशिया फेमस सेटा शाहरुख खान इज मोर फेमस इन मिडिल ईस्ट देन वेस्टर्न कंट्रीज और ईस्टर्न कंट्रीज मिडिल ईस्ट से बहुत बड़ फैन तार समस्ते शाहरुख खान पे लोक सेठी बहुत बन तार चाहिदा इवन तो कोट ना कोट
से पर्सन रो आइडेंटिटी से पर्सन रो जो डेलीवरी करे सेटा आउ जोठी तार फैंस अछन ताको पसंद करिया लोक अछन ताको भीतर किछिटा किछि कम्युनालिटी अछि जोथि पय ताको लाइक करंती एबे रिसेंट गुटे आसाम रो सिंगर थिला जुबिन गर्ग सुनिछ कि जुबिन गर्ग तार बहुत रील्स विल्स आसु people of Assam ताको they were treating him as a god माने भगवान को द्वितीय रूप बोली कहथुले and he was not only a singer but ताकर आइडियाज लोगन को एते इन्फ्लुएंस करथुला से जो पॉलिटिकल पार्टी कहबे से पॉलिटिकल लोक वोट देबा बाध्य देबे से के करू नथिले अथच से जे पॉलिटिक्स रे ठिया थांते बाकी पॉलिटिकल पार्टी बंद हे जांदा सेते इन्फ्लुएंस से रीजन रे ताकर थिला that person जे कि कास्ट को सपोर्ट करू नथिले he had no caste no religion से निजको गोटे ह्यूमन हिसाब रे देखुथले तो तार आइडियोलॉजी लोकन को एते भलो और ही वाज जति से अर्न करथले सेति मेजॉरिटी पर्सन ही वाज हेल्पिंग पीपल और से जिनसटा ताको असम रे एते पॉपुलर कर देथिला कोन न कोइ कहउ सेटा ताकर डेथ रो भी रीजन हैला बोली कहउ छै समथिंग सुशांत सिंह राजपूत सुनछ गोटे एक्टर थिले से डेथ हे कि पाखा 5 इयर्स हे गलानी पाखा बाकी ताकू लोक आज मन पकाउछन नॉट बिकॉज ऑफ हिज एक्टिंग स्किल्स बिकॉज ऑफ हिज समथिंग जोटा थिले ता भितर जोटा पब्लिक कनेक्ट करि परछन आज का डेट रे हमरी ओडिसा रो चीफ मिनिस्टर थिले एक्स चीफ मिनिस्टर जे तुम कोन लागुची कंटीन्यूअसली 25 वर्ष रा लोक तांको जितुथिले वोट दोथिले कंटीन्यूअसली विदाउट एनी मैंडेट किछि जे में डेवलप करो न करो जहा करछ करो पीपल वर लविंग हिम यस और नो जितबो लोक लागी लागी तांका हाथ रो पावर जाउची पावर ता आउ कड जाउची बैलेंस होनी तो लोक वोट दा बंद कर देले नॉट जस्ट कि मैं फील हुए नि कि से लोक सहित पब्लिक कनेक्ट कर ओडिसा रे लोक तांको सहित कनेक्ट कर पाछ किछि गोटे कनेक्ट करछन जो कनेक्शन पाएंगे ने ताको कंटीन्यूअसली वोट दोचंती जदियो ही वाज नॉट बिलोंग टू तांकर चाइल्डहुड तांकर जो यूथ जोरा थिला इट इज नॉट बिलोंग टू ओडिसा से बाहर थिले फॉरेनर रुथले बट स्टिल तांको सहित कनेक्ट कर परथुला हमर पब्लिक तो कोट ना कोटी गोटे पर्सन रो चॉइसेस तारो इंडिविजुअलिटी जान पड़छि जाना से नवीन पटनायक जो सूट पिनथांते से नवीन पटनायक जदी सूट पिनथांते आ बहुत एग्रेसिव नेचर हिथांते तुमको लागु जे तांको सेती वोट मिलथांता जदी मिलथुला कोन बुझो जदी से सूट पिनथांते पब्लिक रे हैला अमेरिका जो लाइफस्टाइल से एडी जदी से लीड करथांते ना सो दैट इज योर choices people's choices define them what they are एटा जाना पड़े कि ओडिसा रे लोक दे लव सिंपलिसिटी ये जाना पड़े कि रीजन रे लोक मध्ये कम्युनालिटी अछि सिंपलिसिटी दे लव सिंपलिसिटी इंडिया लव सिंपलिसिटी ओके दे कैन कनेक्ट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन तुम देखो रैपर मानकर फैन बेस गोटे टाइप रो थाए से फैन बेस ताको फॉलो करंती ताको लाइक करंती ता गीत सुनंती और से फैन मानक भीतर किछ कम्युनिटी थाए सिंगर मानक जे पर्सन करे ताको भीतर कम्युनिटी थाए गोटे एक्टर गोटे जाको गोटे पॉलिटिकल लीडर ओके गोटे पॉलिटिकल लीडर गोटे आईएएस ऑफिसर जाको ब्लाइंडली फॉलो करन ताको भीतर किछ कम्युनिटी थाए गोटे टीचर हला गोटे पर्टिकुलर यूट्यूबर जो हम कहउछन कोन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोली कहउछन ताको भीतर भी सेमति किछ कॉमन जिंस थाए तांकर दे कैन हिट दे कैन टारगेट पब्लिक को समान ताको कैप्चर कर परंती एंड इट सेज अबाउट दोस पर्सन से पीपल मानको विषय रे कहउछि तो वी विल रीड व्हाट आर दोस पैरामीटर्स को जिंस ताको पर्टिकुलर हिट करि परछि आ ताको व्यक्तित्व को सेठी जवा पड़ परछि तो वी विल रीड द फिलोसॉफीज ओके तो मु गोटे अलग डायरेक्शन गली एग्जांपल देखिना नाउ कम टू फिलोसॉफीज एंड थिंकर्स हम एटे पढिबा कि डिफरेंट फिलोसॉफिकल स्कूल रो ओके वी हैव डिफरेंट फिलोसॉफिकल थॉट्स बेस्ड ऑन बिलीव्स हमर कोन कराइ छै सब फिलोसॉफी को डिवाइड कराइ छै ऑन फिलोसॉफिकल थॉट्स और से फिलोसॉफिकल थॉट जो अछि स्कूल ऑफ फिलोसॉफी जंग हम कहै छै पॉलिटिकल साइंस रे सोशियोलॉजी रे वी हैव सम स्कूल ऑफ फिलोसॉफीज मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी मार्क्स कर विचार विचारधारा थिला सेथिरे जो माने विश्वास करंती ताको मार्क्सिस्ट बोली कहै छै ताकू टिके हटकी जो माने टिके मॉडर्निज्म को जानो नियो मार्क्सिस्ट बोली कहै छै ओके सो कोट ना कोट से फिलोसोफर्स पर्टिकुलर मार्क्स थिले तो मार्क्स में फिलोसॉफी गोटे सी गोटे रिवोल्यूशनरी फिलोसोफर थिले
ओके आ ताको फिलोसॉफी रू डिराइव होइछि बहुत सारा फिलोसॉफी मार्क्सिज्म न्यू मार्क्सिज्म ओके प्री एंड पोस्ट तो ताको एज ए बेंचमार्क यूज करा होछि तो वी विल रीड इंपोर्टेंट फिलोसोफर्स एंड स्कूल ऑफ थॉट्स फॉर एग्जांपल वेस्टर्न फिलोसॉफी रे हम पढिबा विभिन्न वेस्टर्न फिलोसॉफी रे हम पढिबा ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस प्लेटो अरिस्टोटल हेगेल हम पढिबा अन्य फिलोसॉफी जेमति हमर रहले नेम फ्यू फिलोसोफर्स जो माने हमर रहले जेस मिल्स ओके जेरेमी बेंथेन तापर हम यूटिलिटेरियन फिलोसॉफी पढिबा इमानुएल कांट तो से माने कोन फिलोसॉफी देथिले आ तांको फिलोसॉफी रे कोन डिराइव होइछि हमें ताकू बुझिबा आ ताकू बुझिबा परे हमें सेगडो केमिति एक्जेक्टली हमरो डे टू डे डिसीजन मेकिंग हम यूज करि परिबा सेटा बुझिबा तापर ईस्टर्न फिलोसॉफी केसो ईस्टर्न फिलोसॉफी बहुत सारा छंती हमरो कन्फ्यूशियस छंती हमरो जापानीज जो डिफरेंट चाइनीज फिलोसोफर्स अछंती इंडियन फिलोसॉफी you have some Indian philosophers like or philosophies like Dvaita, Advaita, Vishishta Advaita, okay, Vedanta, achi, Upanishad is also a philosophy in itself, okay. Then you have some Siddhanta, some chunitio Arya Siddhanta. तो India रे भी philosophies अच्छे, school of thoughts अच्छे, मध्यम philosophy, okay. So there are different philosophies in India. Buddhist philosophy, Jaina philosophy, okay. तो कोट ना कोठी हमें से philosophy को use करके हमें decisions नवा. First है ला different ethical terms जोड़ा morality है ला तुम्हारो attitude है ला emotional intelligence है ला से तक बुझिया. तापरे philosophies बुझिया. ये philosophy को केमती हमें decision making रे use करवा से दिरा अंडरस्टैंडिंग हमें बुझी परिबा देन हला आ गोटे बड़ जिंस होचे याको हमें डिवाइड करछे पाठ जेतले पढिया हला डिफरेंट टाइप्स ऑफ एथिक्स नाम पढिबा एलो हमें नॉर्मेटिव एथिक्स कहउछु कोडा मेटा एथिक्स कहउछु कोडा को हमें अप्लाइड एथिक्स कहउछु ए सब जिंस पुनी ताको डिवाइड करके हमें प्रॉपर फॉर्मेट रे पढिबा बिकॉज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू इट इज प्रैक्टिकल थिंग्स व्हाट वी विल राइट इन द एग्जामिनेशन वी हैव राइट इट थियोरेटिकल ओके सैडली mere writing the exam will not make you ethical but हमको तो मार्क्स फेच करियर अच्छी we are reading for securing high marks तो हमें ट्राई करिबा कि मार्क्स भी बहुत आनिबा आउ किछिटा बुझिबा हमें दीटे जगह कॉम्बिनेशन हमें ट्राई करिबा ओके we will write in a particular write केमिति मार्क्स अधिक आनिबा ता टेक्निक में कहबी गोटे क्वेश्चन अछि से क्वेश्चन को हमें केमिति लिखिले हम अधिक मार्क मिलिबो ओके मु ताको बुझेबी आ तो ओइटाई बुझेबी कोन ठीक कोन भूल okay you can write it in ethical ethics ro bode jodi case study asibo you have many style of writing যেমন essay hame 30 জন 30 प्रकार essay लिखि परिबे okay but I will tell you what is the best way of writing an essay तमे essay तो chat gpt में chat gpt भी तुम essay देबो किंतु से essay ता तमे UPSC रे लिखि परिबोनी कि मा सिविल सर्विस एग्जाम रे लिखि परिबोनी हम सिविल सर्विस एग्जाम पाए कि गोटे पर्टिकुलर टाइप रे essay दरकार हुए जोटी के एग्जांपल्स थिबो जोटी के हमरो किछरा फिलोसॉफी यूज हो किछरा ओके माने किछि कोटेशंस यूज हो किछि हमर जीएस रो किछि टॉपिक सेठी पढिबो तो गोटे कंप्लीट एसे उडा लागिवो किछिटा हमर सोसाइटी प्रति बेनिफिट थिबो से एसे रे किछिटा गोटे इंट्रोडक्शन थिबो एसे रे गोटे कंक्लूजन थिबो एसे रे गोटे किछि बॉडी रे पेस्टल अप्रोच थिबो ओके तो दोस आर आवर काइंड ऑफ एसेस जोटा कि हमरो नॉर्मली को यूनिवर्सिटी बुक रे तुम पाइबनी और नॉर्मली मना करा जाय हम सिविल सर्विस एस्पिरेंट को कि गोटे बुक रे तुम पढनी एसे हम सिविल सर्विसेज रे थे सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट माने को एसे पढले टिके लाभ अछि ए यूनिवर्सिटी एसेस पढले हम एसे इट वोंट हेल्प यू नो कि तो हमें एग्जाम रे लिखिया पे को टाइप रो अप्रोच दरकार ताकू बुझिबा तो लेट अस सी द सिलेबस ऑफ एथिक्स हमें वर्तमान हम कोन सिलेबस अछि एथिक्स ताकू देखिबा तापर हम टिके देखिबा बेसिक ऑफ एथिक्स पेपर 5 जनरल स्टडीज फॉर एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड तीन टाइप्स अछि एथिक्स integrity and aptitude is subject to narrow hierarchy. These are the broader terms. This paper will include questions to test the candidate's attitude and approach to issue relating to integrity, probity in public life, and his problem-solving approach to various issues and conflicts faced by him in dealing with society.
Questions may utilize the case study approach to determine these aspects. The following broad areas will be covered. कौन कौन कवर होगा? Ethics and human interface, essence, determinants and consequences of ethics in human actions, dimensions of ethics, ethics in private and public life or relationships. Then are human values. এটা হচ্ছে তোমার ফার্স্ট টপিক। ফার্স্ট হলে ethics and human essence কোন তার ओके एसेंस टा तुम बतैली बर्तमान डिस्कस करली। डिटरमिनेंट्स से लोकर एथिक्स रो डिटरमिनेंट्स माने होची कोन कोन फैक्टर्स ता एथिक्स को डिटरमाइन करे एटा भी तुमको पार्शियली मैं कहि छी आपको डिसाइड करे अपन डिस्कस करबा। देन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, से एक्शन रे हमें एथिक्स रो कॉन्सिक्वेंस कोन हुए, रिजल्ट्स कोन हुए। देन यू विल रीड डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, एथिक्स रो भी केते डायमेंशंस अछि। Then ethics in private and public relationships. Our private life रे ethics और public life रे ethics तार relationship टाइम में डिस्कस करेगा। सेटा हसरो ethics of human interface or basics. Then human values, lessons from the lives of and teachings of great leaders, reformers and administrators, role of family, society, educational institute in inculcating values. एटी हम human values पढ़िया। Now ethics is different from values. There is a different from ethics of values में किछि किछि डिफरेंस अछि ताकू बुझिबा। तापर हम देखिबा अन्य जो ग्रेट लीडर्स माने अछंती ताको हमें ताको टीचिंग्स रो ताको लाइफ रो कोन वैल्यूज हमें देखिबा। देन रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, रोल ऑफ फैमिली, परिवार रो कोन रोल रोची गोटे पिलर वैल्यूज रे। देन सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यू ऑफ ए पर्सन, दैट इज हमर गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिंस क्वेश्चन 100% ए देखो ए दीटा यूनिट रो हमर 100% दीटा क्वेश्चन आसीबो ही आसीबो। 30 रो 40 मार्क क्वेश्चन केवल ए दीटा यूनिट रो हमर आसीबो। देन जिबा एटीट्यूड, एटीट्यूड कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशंस विथ थॉट एंड बिहेवियर ताकू बुझबा। देन मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। सो एटीट्यूड कौन, तार कंटेंट स्ट्रक्चर कौन, ता फंक्शंस कौन, आउ तार रिलेशन एंड थॉट्स एंड बिहेवियर। गुटे सुनिथियो एटीट्यूड खराब, ए लोकर एटीट्यूड खराब, यार पॉजिटिव एटीट्यूड यार नेगेटिव एटीट्यूड हम सुनि जंती सेटा माने कौन, ता एटीट्यूड समिति काहे के हिची, से केमति इन्फ्लुएंस हिची, और तार तार बिहेवियर केमति शेप कर से एटीट्यूड ताको बुझिबा, और परसुएशन विषय बुझिबा। Then aptitude and foundational value of civil services. Aptitude हम civil हमर ऊपर ही लिखा हेडिंग रे aptitude वर्ड लिखा अछि। तो attitude is different and aptitude is different, and foundational value of civil services: integrity, impartiality, non-partisanship, objectivity, dedication to public service, empathy, tolerance, compassion towards the weaker section। एटा गोटे public servant भितर कोन कोन रहै दरकार सेटा एटी गुडिया। Then I measure emotional intelligence. Emotional intelligence is again another chapter. तो ये जो दीटा रहला सेटु हम दीटा क्वेश्चन फेस करबा, एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड रो। देन आसला इमोशनल इंटेलिजेंस, concepts and their utilities and application in administration and governance. इमोशनल इंटेलिजेंस कोन, ताको यूटिलिटी कोन, तार एप्लीकेशन बुझिबा। एति के गेला तमर पांचटा क्वेश्चन देखो हम काउंट कर दो, तुम क्वेश्चन केम डिवाइड कर दो माने। कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, या ऊपर दीटा क्वेश्चन। Okay, we will read the moral thinkers, philosophers from India and world. This is very very important और तांका application हम करियर अछि। अच्छा ए सबरो गोटे इंटरकनेक्टेडनेस हम सेटे एग्जाम लिखियर अछि, एमति नो ए चैप्टर पर चवन केवल ए थ्रू ही लिखियर अछि, हम ता भीतर इंटरकनेक्टेडनेस एस्टैब्लिश करियर अछि। 17 क्वेश्चन हे गेला। देन पब्लिक सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एटा पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रे किमा लोक प्रशासन रे कोन कोन वैल्यू ऑफ एथिक्स हम रहिया दरकार, तंग प्रॉब्लम, एथिकल कंसर्न्स एंड डिलेमास इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, सरकारी और बेसरकारी इंस्टीट्यूशन मानक भितर कोन कोन एथिकल कंसर्न्स और डायमेंशंस और डिलेमास आसे ताको डिस्कस करिवा। लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड कंसाइंस as source of ethical guidance। हमें सुनिथिले कि ethics तो हमरो कोन करबा न करबा ता सहित रिलेशन अछि, किंतु हम देखले एटी लॉ, रूल, रेगुलेशन कोन पळे आसिला। यस, लॉज, रूल्स और रेगुलेशन सहित ethics रो बहुत बहुत ही हमरो इनविजिबल कहि परबा, आ हम कहि परबा गोटे बहुत अटूट बंधन जो कोन ना ए दिजन भीतर बहुत रिलेशनशिप अछि। लॉ और रूल जंग ethics को शेप करे।
accountability and ethical governance जोटा कि हम गवर्नेंस रे भी पढुचंती strengthening of ethical and moral values in governance ethical issues in international relations and funding corporate governance एति इंसान पढिबा देखो लास्ट टू corporate governance लिखाइ छै माने गोटे कंपनी रे गवर्नेंस के चले ता विषय भी लिखाइ छै तो एई थ्रू दीटा क्वेश्चन आसीबो न नोटा क्वेश्चन हे गेला देन probity in governance ता अंडर हम पढुचंती concepts of public service philosophical basis of governance and probity information sharing and transparency in government right to information code of ethics codes and conducts citizen charters work culture quality of service delivery utilization of public funding challenges of corruption जोटा कि अगेन आमे गवर्नेंस रे और जीएस रे ऑलरेडी पढुचंती जस्ट आमे ताको रिलेट करबा बट राइटिंग स्टाइल खाली डिफरेंट हो अगेन या ऊपर तमरो दुटा क्वेश्चन आसिला तो तमर हे गेला एटरे 11 टा क्वेश्चन then case study on above हला टोटल मिसे कि टोटल हम 15 टा क्वेश्चन अप्रोच करिया अछि जदी एग्जाम रे हम जो फॉर्मेट रे आसे एग्जाम रे वी आर राइटिंग सम 15 क्वेश्चंस ओके सेथरे तुम केस स्टडी भी थाए तुम चूज करिवार थाए तो दिस इज द बेसिक सिलेबस ऑफ एथिक्स तुमरो एथिक्स रे बेसिक सिलेबस हमर रहि गेला ओके डू यू हैव काबर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अछि कि एथिक्स रा दीपक अछि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गोटे वर्ष माने लास्ट ईयर पठाओ तापर बाकी ईयर डाउनलोड करी पठाओ ए संग संग लास्ट ईयर पठाओ ओके तो हियर इज द सिलेबस ऑफ एथिक्स देन वी विल सी कि ए जो सिलेबस रे हमरा क्वेश्चन केमिति आछुची ओके बिकॉज़ व्हाट वी आर रीडिंग भाबे हम 90% केवल एग्जाम पाई पढुचंती हैला आउ एग्जाम रे केमिति लिखियार छै भलो आंसर ता टेक्निक बुझिया पाई का तुम जहा जहा सिलेबस भीतर दरकार ताको हम बुझिया ए क्लास रे ओके पठेला अच्छा मते को गोटे सिविल सर्वेंट में गोटे पब्लिक सर्वेंट में हां गोटे पब्लिक सर्वेंट में व्हाट आर द एथिकल वैल्यूज नीडेड फॉर ए पब्लिक सर्वेंट के कहबो व्हाट आर द एथिकल वैल्यूज आर इंपोर्टेंट फॉर पब्लिक सर्वेंट्स समस्त गोटे को ये जानि छ ऑनेस्टी पठेले मते दीपक हां पठै छी जाउ छी नेटवर्क स्लो अछि ओके ओके यस कोन दरकार पब्लिकल वैल्यूज कोन दरकार समस्त गोटे पॉइंट को लेखनी पछाड़ो ऑनेस्टी अकाउंटेबिलिटी वेरी गुड अकाउंटेबिलिटी देन तुम कोन कहलो ऑनेस्टी आउ इंटीग्रिटी टॉलरेंस honesty तो कहला compassion very good how emotional intelligence efficient effective okay impartiality very good now objectivity correct अपन दरकार और पब्लिक सर्वेंट कौन दरकार अच्छा सिंपैथी है जो सिंपैथी दरकार कि नहीं सिंपैथी एम्पैथी पॉजिटिव एटीट्यूड दरकार कि नहीं और पॉजिटिव एटीट्यूड दरकार कि नहीं हां ओके देन मोरालिटी दरकार कि नहीं दरकार so these are the basic values public servant का डिटेल पढ़िया कि या माने कोन इमोशनल इंटेलिजेंट दरकार कि नहीं पंक्चुअल दरकार कि नहीं सेल्फलेसनेस हवा दरकार कि नहीं दरकार ओके
तो यही सब क्राइटेरिया दरकार हम नोलान प्रिंसिपल्स अछि नोलान कोन कहली आपन नै कि ना ओके सो ताको हम पढिबा तो गोटे पब्लिक सर्वेंट रो कोन वैल्यूज रहबा दरकार कोन एथिक्स रहबा दरकार ताको हम थियोरेटिकली पढिबा हला हम जानि छथि एबळे ओवरऑल नॉलेज अछि बट ता थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव हम देखिबा हम एथिक्स चलो ए जो हम पढिबा एथिक्स सेटा को हम एग्जाम रे केमति अप्रोच करबा ताको टी बुझबा केन बुझबा डायरेक्ट क्वेश्चन देखिना ओके हमको एग्जाम रे टोटल एथिक्स रो ओके 3 आवर्स रे गोटे एग्जाम लिखिया पे पड़े जति तुम पढिबो गप एते सब पढिबो 3 घंटा सब लिखिबो जनरल स्टडी भी तुम 3 घंटा लिखिबो सब 3 घंटा लिखिबो ओके सो 3 आवर्स रे यू हैव टू राइट 250 मार्क्स ओके हम जो वर्तमान पर्यंत 2 वर्ष एथिक्स इंट्रोड्यूस हेची देयर आर 2 ग्रुप्स जेमति हम जीएस रे बाकी पेपर रहउची ओके टोटल 17 क्वेश्चंस ग्रुप ए रे 12 टा ग्रुप बी रे 5 टा क्वेश्चन ओके तो से 12 टा भितर हमको लिखिया थाए 10 टा क्वेश्चन लिखिबार थाए ओके आउ बाकी 5 टा क्वेश्चन कंपलसरी थाए हैला तो 10 into 15 is 150 and 5 into 20 is 100 means 250 marks क्वेश्चन हमको लिखिया था within the span of 180 minutes 3 hours उतर लिखिया अछि हैला so this is the question paper रे हम देखि दिया इमदी हमर गोटे क्वेश्चन पेपर आसे देखियो क्वेश्चन पेपर रे तमरो छोटे छोटे क्वेश्चन अछि हैला 2-3 लाइन वाला क्वेश्चन अछि 5 लाइन 6 लाइन वाला क्वेश्चन भी अछि तमरो एठी देखाउ छै क्वेश्चन भीतर भी क्वेश्चन रहउछि होले क्वेश्चन रे गोटे टॉपिक रहउछि ता तळे तमरो a 1 2 3 करके ना तमरो ता तळे भी रहउछि कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन रहउछि देन बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन बेस देखो पूरा गोटे केस लिखाई छी तळे लिखा बेस्ड ऑन स्टोरी ओपिनियन तारो एक्शन विषय को बोली कहउ छी तो एटी वैरायटी रे क्वेश्चन अछि देखो छोटे छोटे क्वेश्चन अछि आउ छोटो क्वेश्चन अछि बड़ा क्वेश्चन अछि तो एथिक्स पेपर ता एटा पे देखि हमर टिके डिफरेंट फ्रॉम अदर पेपर देखिछ केमति कोडी यूनिफॉर्मिटी थाइ गोटे पेपर एठी किन देखो कोडी एसे लिखला वाला देखाउ छी कोडी गोटे कविता लिखला वाला देखाउ छी देखो केते गोटे क्वेश्चन 2-3 पेज रो 2 पेज रो क्वेश्चन खाली तुम लिखाइ छै ए सब दाम तुमको 3 घंटा भीतर सारिया छै ओके तो मु तुम एटा कहया पय चाहू छी एथिक्स रो पेपर ता जति कि सहज हम भाबु छंती सेति कि सहज भी नुहे आ जति कष्ट भाबु ऑब्वियस जति कष्ट भी नु काहे ना या अप्रोच तुम गोटे कोन दरकार एथिक्स पय कोन स्किल दरकार यू नीड टू बी वेरी वेरी फास्ट तुम बहुत फास्ट लिखया पे पड़ी एंड यू हैव टू बी ए वेरी गुड रीडर तुमको कॉम्प्रिहेंशन भलिया बहुत फास्ट पढिया पे पड़ियो पढी की बुझी की आंसर लिखिया पे पड़ी बुझि पाछो एंड विद इन द स्पैन ऑफ 3 आवर्स तो प्रॉब्लम कोठी हबो प्रॉब्लम कोठी नै प्रॉब्लम अछि जदी अछि मार्क्स स्कोर के 150 स्कोर करे के 110 स्कोर करे के 90 स्कोर करे एथिक्स गुड पेपर जोडी अधिक आमी कोन करिया मार्जिन पाइ परबे मु सब बळे कहे जीएस 4 जोडा के एथिक्स एसे आउ ऑप्शनल ए तीनटा पेपर होची तुमको सिलेक्शन करेबो किबा तमरो रैंक आनिबारे सबुटो मूल मैक्सिमम रोल जदी कार अछि से होची ए तीनटा ए चारटा पेपर गोटे होची ऑप्शनल पेपर 1 ऑप्शनल पेपर 2 जीएस 4 आ तमरो एसए ओके ए चारटा पेपर तमरो सिलेक्शन करेबो कि सिलेक्शन करेबोनी जदी सिलेक्शन करेला को रैंक तमरो आसीबो ताको डिटरमिनेंट्स ऑफ ए टॉपर स्कोर जेमि डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स अछि ना ए डिटरमिनेंट्स ऑफ ए टॉपर स्कोर रे तमन कहबे ए चारटा पेपर जीवो बाकी तीनटा पेपर जीएस 1 2 3 तमो राइटिंग स्किल डेवलप करिया पे प्रैक्टिस करिया पे ओवरऑल तमरो आइडियाज डेवलप करिया पे हेल्प करे क्लियर हमर जो जीएस रो गोटे बैच चलछि सेठी हम क्वेश्चन आंसर एंड केस स्टडीज देबी बट सेठी हम डिटेल सब जीवानी हम केमति लिखिबा कोन अप्रोच करिया पूरा डिटेल हम एथिक्स बेस रे पढिबा ए जो पेपर ता मु कहली चारटा पेपर मन पढिसन गाउसरे एसे एथिक्स पेपर 1 पेपर 2 ऑप्शनल पेपर 1 पेपर 2 ऑप्शनल जति इंपोर्टेंट रहउची एसे और एथिक्स तममे सेति इंपोर्टेंट रहउची आ बिलीव मी ए चारटी जा पेपर रे यू कैन स्कोर 150 भलिया स्कोर तमे करि परियो 150 160 आउ पीपल आर स्कोरिंग ए जो चारटा पेपर रे पीपल आर स्कोरिंग 150 160 in ethics in essay in optional paper 1 and optional paper 2 बुझिलो
क्यों मान क्लियर है एथिक्स रे इंपोर्टेंस बुझि पालो बर्तमान समझते हैंड्स अप कर जो मैं बुझि पालो ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ପେପର ଯାର ଜଣଙ୍କ 100 ଆସିବ ଜଣଙ୍କର 170 ଆସିବ ଜଣେ जीएस କେତେ ପଢୁ ଯଦି जीएस ଆଉ ଏଥିକ୍ସ ରେ जीएस ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍કોର ଦେଖିବ ପାଖାପାଖି ସିମିଲାର ଆସେ ଗୋଟେ 90 ର ବେଞ୍ଚ ରୁ ନେକି 80 ର ବେଞ୍ଚ ରୁ ନେକି 120 ବଜେ भले मार्क आसे अब ओपीएससी कोन करे टिके मिस कैलकुलेशन मिस इवैल्यूएशन करे गोटे गोटे पिलांकर 150 पळे गोटे गोटे पेपर केवल जीएस 2 रे ही करूजे नले जीएस 13 रे सब बोले देखियो गोटे नॉर्मल मार्क्स थाए किन एथिक्स एसे आउ ऑप्शनल रे पूरा रेंज बहुत बड़ा रेंज रे सब बोले ओके सो एथिक्स इज वन ऑफ दैट पेपर जो पेपर की इजी और स्कोरिंग आ जदी हमें टिके लाइट लेले से एवरेज स्कोर हे जीवो हमें यूज कर दवा तो बाकी पेपर रे एवरेज स्कोर इज गुड एथरे एवरेज स्कोर इज बैड ओके सो क्वेश्चन देखो इन आवर सोसाइटी contrasting attitudes are prevalent about many social problems and prejudice like gender discrimination. What contrasting attitude do you notice about gender discrimination? As the head of the office, what steps do you take to reduce gender discrimination at your workplace? एटा गोटे सुनले गोटे सोशली इंडियन सोसाइटी वाला क्वेश्चन लागुछ ना हाथ उठले समस्त गोटे सोसाइटी रे क्वेश्चन वाला फील होछ ना दिस इज ए क्वेश्चन लाइक सोसाइटी जदि हमें से वाला लिखिबा हम मार्क मिलियो कि ए क्वेश्चन रा आंसर लिखला बेले हमर एथिकल टर्म्स सब इटू आसे पे पड़िबो और हमर जो टर्म्स अछि हमर जो लैंग्वेज अछि से लैंग्वेज गुडा को एथिकल लगिया पे पड़िबो तो यार राइटिंग होछि डिफरेंट बेसिक डिफरेंस इज द लैंग्वेज जो लैंग्वेज हम लिखुछन्ते ताको जो जनरलिस्टिक लैंग्वेज लिखिया हम जनरलिस्टिक मार्क आसीबो ताको जो एथिकल टर्म्स लिखिया एथिक्स रो भलो मार्क आसीबो और सेही जिंस हम लर्न करबा एथिक्स रे ओके सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देखो केते लंबा क्वेश्चन अछि You serve as a municipal corporation of a large city known for your integrity and honesty. A vast multi-purpose mall is being built in your city, employing numerous daily wage workers. One night during monsoon season, a substantial section of the roof caved in, resulting in the immediate death of 4 laborers, including 2 minors. Many others sustained serious injuries and required urgent medical care. The incident led to significant public outcry, prompting the government to launch an investigation. Your initial assessment has uncovered multiple irregularities. The materials used for constructions were of substantial quality. Despite the building plan only allowing for 1 basement, an additional basement has been constructed. This was ignored during routine inspection by the municipal corporation's building inspector. In your investigation, you discovered the mall's construction was approved even though it encroached a designated green belt area and a slip road outlined in the city's zonal master plan. The previous municipal corporation, who is both your senior and a close friend, granted permission for the mall's construction. It strongly appears that there is a widespread collusion between municipal officials and the builders. Your colleagues are urging you to slow down the investigation. The builder, who is wealthy and influential, happened to be close relative of a powerful state cabinet minister. He is attempting to convince you to bury the issue, offering you a considerable amount of money in return. He also hinted that if this matter is not settled quickly in his favor, someone in his office is ready to file complaints against you for sexual assault. ये होछ गोटे केस हमरो मिलि छै गोटे केस गोटे तमे म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर अछि गोटे कॉर्पोरेट कमिश्नर अछि गोटे सिटी रो सेट गोटे रूफटा पड़ी जाई छी गोटे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग रो जोटी 4 जनकर डेथ हेई छी सेतरु 2 जन माइनर अछंती ओके आउ बाकी माने इंजोर होइचंती एबे देखिला इन्वेस्टिगेशन रो जहां पड़ला कि बहुत सारा एरर्स रही छी अनएथिकल जिंस हेई से देखि हला बहुत सारा अनएथिकल जिंस हेई छी बट तुम पाखरे कंसर्न एटा प्रॉब्लम एटा है छी एटा एथिकल तुम बार डिलेमा छी कि से तमरा जे अप्रूवल देती से गोटे तमरा हैपेंस टू बी योर क्लोज फ्रेंड एंड से बिल्डिंग ओनर जे से गोटे कैबिनेट मिनिस्टर रा कोन रिलेटिव
और सी तुमको धमक दौचे कि भाई जदि किसी कर सेक्सुअल असल्ट केस रे तुमको फसा हो जो कि बहुत कड़ा दंड मिले आ तार ऑफिशियल्स माने भी कहते कि जल्दी जल्दी केसटा तू डिले कर कि सल्व जदि करू या फेवर करे सो एई केस रे तुमर स्टैंड कोन हवा दरकार एठी आसीबो तुमर ऑनेस्टी इंटेग्रिटी प्रोबिटी okay decision making here the principles the philosophies of utilitarianism एठी तुमर आसीबो the philosophies of virtue ethics philosophy of virtue तो एई गोटे पूरा होलसम आंसर लिखिया पाई का एति कि तुमर अगेन तुमर एठी आसीबो रोल ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट ओके एठी आसीबो तुमर एटीट्यूड एठी तुमर आसीबो एप्टीट्यूड एठी आसीबो डिसीजन मेकिंग ऑब्जेक्टिविटी ओके ए सब एठी रोल आसीबो गोटे एथिक्स रो होलसम आंसर एठी बनिबो एंड विदिन 250 वर्ड्स ना you have to write within a limit of 250 words से तुम पूरा आंसर को लिखिबार अछि आ एते सुंदर तुम लिखियो जाके तुम मार्क नबो तो याको जनरल समस्त बुझा पड़छि हां एडा गोटे केस अछि हम कोन लिखिबा लिखि दो किछि भी तो किछि भी लिखले किछि मार्क मिलिबो ओके अगेन मु कहले भलो मार्क दिया पे जदी अछि ताले हम कोन करि पारिबो ए आंसर टाको बहुत ऑप्टिमम लेवल लिखिया पे पड़िबो Similarly, question number 3, public servants have a moral responsibility because they occupy positions of integrity and power and dealing with many public funds. Their decisions have a wide-ranging impact on society and the environment. What steps will you initiate to improve your duty and moral responsibility to handle such empowerment? मो फर्स्ट रो कहली गोटे पब्लिक सर्वेंट को काहे के एथिक्स पढ़िया दरकार बिकॉज़ तारा हाथ रे किछि पावर्स रोचे किछि रिस्पांसिबिलिटी रोचे such as financial responsibility such as responsibility towards people and some discretionary powers ए सब पावर भितरे तमर जो तमे सोसाइटी में डिसीजन नबो एंड योर डिसीजंस विल इम्पैक्ट द सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट रिमेंबर तमे जा भी डिसीजन नोचो से परिवेश को से समाज को ये इन्फ्लुएंस करिवो तो तमे कोन एमिति स्टार्ट करिवो तम ड्यूटी रे एंड मोरल रिस्पांसिबिलिटी टू हैंडल सच एम्पावरमेंट से जो पावर को हैंडल करिया पे तमे एमिति कोन स्पेशल करिवो से लिखिवो इट सीम्स टू बी वेरी सिंपल क्वेश्चंस बट ए सिंपल क्वेश्चन रो तमे केते भल से लिखुछो केते सब्जेक्ट लिखुछो तम आंसर टा तुमु सेते मार्क्स अवार्ड हो बुझ परछो Similarly, education is not an injunction; it is an effective and pervasive tool for moral development of an individual and social transformation. Examine the new education policy 2020 NEP 2020 in light of Hope statement. देखो अगेन आमे तो एथिक्स पढ़िले आमे तो मोरल पढ़िले वैल्यूज पढ़िले एटीट्यूड पढ़िले ऑब्जेक्टिविटी पढ़िले एप्टीट्यूड ए सब पढ़ुचंती ये पुणी एनईपी 2020 कोडी आसला बुझि परछो तो क्वेश्चन आसबो एवडा आंसर तमे इंटीग्रेटेड आंसर लिखिया पे पड़िबो कि केमिति आंसर लिखबो एवडा क्वेश्चन को कि जीएस रो भी जिंस अछि एठी थ्योरी भी तुम लिखिबो तुम निज ओपिनियन भी लिखिबो तुम स्टाइल लिखिबो दैट टू बी गोटे आंसर एमि लिखिबो जे अन्य मान उठे तुम 10 मार्क 5 मार्क 20 मार्क अधिक रखिबो सेटा जानिबा में एथिक्स रो ए पेपर रे ए बैच नंबर मोर एम हला नॉट जस्ट कि आमे गोटे पेपर खाली एज इट इज 120 110 105 रखले वाले रखिबे आमे गोटे बेस्ट मार्क्स अछि ना ताकू अप्रोच करिया पे केमति हबो ताकू आमे एटी सिखिबा Similarly, देखो एक क्वेश्चन जीएस भी अच्छा some recent developments such as introduction of RTI Act, media and judicial activism, etc., are proving helpful in bringing about greater transparency and accountability in the functioning of government. However, it is also being observed that at times the mechanisms are misused. Another negative effect is that the officers are now afraid to take prompt decisions, analyzing the situation in detail and suggest how this dichotomy can be resolved, suggest how this negative impact can be minimized. Here they are asking about RTI रो misuse विषय को होची आ से misuse को केमिति रिजॉल्व करबो सेले पचार होची अगेन इट इज नॉट ए आंसर ऑफ गवर्नेंस एटा निश्चय क्वेश्चन अछि गवर्नेंस रे क्वेश्चन एटा गोटे तमरो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रे क्वेश्चन बट तुम एथिकल एंगल रे लिखियार अछि से जिंस रे तुम एटी सिखिबो हला नॉर्मल तो देखि ना पड़छि खाली एनीवन कैन राइट एन आंसर यस और नो हाथ उठाओ एथिक्स रे के फेल हेबन मु जानि छी नोबडी विल फेल इन दिस पेपर बट सिलेक्शन दबो ए पेपर रिमेंबर दिस पेपर विल गिव यू सिलेक्शन what do you mean by the term constitutional morality how does
वन अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी देखो गोटे टर्म भी पचारे एमती जो टर्म के तुम सिलेबस रे नाही दिस टर्म इज नॉट इन योर सिलेबस ओके ए भलिया टर्म्स गुडा तुमको मैं एक्स्ट्रा पढ़ेबी जोटा कि सिलेबस रे नाही जो टोटली बट एग्जामिनेशन रे एग्जामिनर इज वेरी मच इंटरेस्टेड टू आस्क सच तो मुझसे माने ए भलिया किछिटा टॉपिक पचारबे जोटा कि कहार आइडिया नथिबे जी एगुडा लिखिला अटेंड करला जोडे एक्स्ट्रा मार्क्स पाइबो एगुडा सब बोले हैला तो हम एथिक्स बैच रे हमें से सिलेबस बादे एग्जामिनर जहा जहा इंटरेस्ट होची केतरा एमती टर्म गुडा ताको भी पढिबा अब बेसिकली ए जो टर्म गुडा हमरो सी नै के आसंती प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नै के आसंती यूपीएससी रो ओके किबा करंट अफेयर्स नै के आसंती करंट रे कोन चाली छी से केसेस रो आसंती Similarly, corporate social responsibility makes companies more profitable and sustainable. Analyze. Corporate ethics रे CSR थाए सुनिछु हम जनरल स्टडीज रे अछि CSR ए CSR टा कंपनी मानको अधिक प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बनाती तको एनालाइज करियार अछि अगेन इन एथिकल एंगल ए क्वेश्चन गुडा सब जनरल स्टडीज वाला लिखिबो तुम कम मार्क मिलियो कि एथिकल एंगल लिखले जाकी भल मार्क टे पाइ What do you understand by cultural competence? Again, a question is cultural competence. Why is it important for civil servants to provide effective governance? Discuss. Cultural competence माने सब सांस्कृतिक दक्षता माने कोन और इफेक्टिव गवर्नेंस पई यारो गुड सिविल सर्वेंट को केति तार जरूरी रही छी ताको डिस्कस करिया How do code of conduct, code of ethics and citizen charter interrelate and contribute to promote accountability and ethical behavior in public administration? Code of conduct, code of ethics and citizen charter टा केमिति परस्पर सहित रिलेट करूछंती एटा हम टॉपिक सिलेबस हम देखिले अछि सेथु डायरेक्ट क्वेश्चन मु जेमिति कहले सेमति आछन ना देखो प्रति जिंसर गोटे क्वेश्चन आछुछ देखो again the eminent personality which employment has influenced your moral views the most list his or her moral values and discuss how you will apply them as a public servant first class रे हम डिस्कस करले कि सिंगर विषय रे कि पॉपुलर सेलिब्रिटी विषय रे तांकर कोन वैल्यू तां कोन ए सब जिंस उडा का मेटू बुझिबा एंड मन रखो आई विल डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम तुम आसीबो मु एथिक्स बैच रे किछि डायरेक्ट क्वेश्चंस करबी जो क्वेश्चन तुम एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करबो एग्जाम रे एटा आसीबो बोलिका Next question, what are the key differences between aptitude and attitude in the context of administration and governance? Discuss with example. देखो attitude basic question एटा त हम भी डिस्कस करथांते एवला पड़ी जाय सिमिलरली हम मोरल वैल्यू विथ डिफरेंस कोन ओके मोरल और एथिक्स विथ डिफरेंस कोन वैल्यू और एथिक्स विथ डिफरेंस कोन ओके इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल क्वेश्चन विथ इमोशनल इंटेलिजेंस और सॉरी एंड इमोशनल क्वेश्चन और intelligence question with a difference कोना okay similarly objectivity और integrity with a difference कोना integrity और probity with a different कोना honesty और integrity with a difference कोना तो हमें ताको पूरा ऑपरेशन करके ना देखिबा ताको आगो पछो भीतर बाहर सब बुझिबा with examples ताले हम क्लियरली बुझि परबा then conflict of interest affect decision making or ethical decision making what is your view illustrate with examples what are the different kind of conflict of interest discuss okay conflict of interest हमरो conflict of interest माने कोन again dilemmas okay दी पार्टी अछन दी को डिफरेंट इंटरेस्ट अछि दी डिफरेंट ओपिनियंस अछि okay decision making रे सेटा अफेक्ट करे तो what is your view illustrate with example what are the different kinds of conflict of interest discuss याको हमें again example भी दरकार आ बाकी याको ethical angle रे हम देखियार अछि similarly compulsory question जो पढि छ सेठी गुड केस स्टडी अछि ओके गोटे केस स्टडी अछि व्हिसल ब्लोइंग विषय रे व्हिसल ब्लोइंग माने कोन के जानछ व्हिसल ब्लोइंग माने कोन करप्शन को एक्सपोज करती मिस करप्शन को एक्सपोज करे कि मिस गवर्नेंस की माल एडमिनिस्ट्रेशन को से भीतर ही केवल बाहर को एक्सपोज करे हला विदाउट ताको आइडेंटिटी विदाउट डिस्क्लोजिंग द आइडेंटिटी ताको व्हिसल ब्लोअर बोली कहै छै से उडे व्हिसल ब्लोअर ऊपर ए क्वेश्चन ता छै नेक्स्ट हला again out of case there kete cases pori dekho eta compulsory अछि you are a newly recruited administrator work in a government agency responsible for overseeing elections तो तुमको इलेक्शन गोटे इंचार्ज रे अछि then how can you maintain your integrity and commitment to so non partisanship माने कोन इंटीग्रिटी माने कोन कमिटमेंट माने कोन सब बुझि के हमें आंसर सब लिखियार अछि ठीक differentiate between legality and morality ethical management and management of ethics see देखो
अगेन डिफरेंसेस मु कहली लीगैलिटी एथिक्स और मोरालिटी लीगैलिटी और मोरालिटी बिटर कोन डिफरेंस रहला ताको लिखियर अछि इन एथिकल मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स ओके रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स ए सब ऊपर हम डिफरेंस लिखियर अछि एंड दिस क्वेश्चन विल गिव यू 20 मार्क्स मैक्स वेबर देखें अगेन थिंकर आसीगले एंड ही इज ए फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी बोली कहा जाए मैक्स वेबर को अब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रे सोशियोलॉजी रे पढू पॉलिटिकल साइंस रे पढू से हमको एठी आसे एथिक्स रे तो हम टिके एंगल हम टिके बाहर को जाके भी बुझा पे पड़ो सोन से पढ़िया पे पड़ियो Max Weber said it is not wise to apply public administration the sort of moral and ethical norms we apply to matters of personal conscience. It is important to realize that state bureaucracy might possess its own independent bureaucratic morality. Critically analyze this statement. कौन बुझले इतरो की बुझले कि हाथ उठा anyone understood anything से कहले it is not wise okay Max Weber कहिसंती व्यक्तिगत विवेक पई हम प्रयोग करथबा नीति ओ नैतिक प्रसंग को आधार साधारण प्रशासन रे प्रयोग करबा अनुचित यह महत्वपूर्ण जे देशर अमलतंत्र निजर स्वतंत्र अमलतांत्रिक नैतिकता ग्रहण करि पारे ए मंतव्यर समीक्षा करो या के बुझि पालो के कहले मते एनीवन अंडरस्टूड एनीथिंग दीपक को इलेक्शन एग्जाम टा समर्पित भाई को आके सो लाइन अच्छा ठीक है सब को सौम्य करियो लिप्सा चंदन के कहि परियो अरे गीत को किछि किछि बुझि परछोनी राजलक्ष्मी को तुम तो पढ़ सोशियोलॉजी पढ़ सोशियोलॉजी अछंती मैक्स वेबर अछंती ना तो कौन ये क्वेश्चन मीनिंग ना कौन की बुझी पारछो को के बुझी पारनो अच्छा की बुझी पारुनो हाथ उठा के बुझी पारुनो के लिखि परिबनी के एको बुझी पारुनो हाथ उठा जणे हाथ उठेले आ बाकी सब बुझी पारछो लिप्सा बुझी पारन जाओ की बुझी पारनो तुम बुझी पारलानी अच्छा चंदन बुझी पारलानी बाकी न बुझे तो हो माने एटा ऑब्जेक्टिविटी ऊपर कहूची गोटे लोक बायस ना होई कि ना हला नहीं रही तो से कहले कि जो मोरल और एथिकल नॉर्म हमें बाहर यूज करू सेम यूजरा ब्यूरोक्रेसी रे हमें यूज कर परन बेसिकली मैक्स वेबर इज नोन एज द फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी ओके से ब्यूरोक्रेसी कि अमलातंत्र उड़िया तक कह जाए ता विषय जनक एथि पय कह जाए बिकॉज़ से ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु ता ऊपर इन्वेस्टिगेशन ब्यूरोक्रेसी ऊपर थ्योरी दिछंती तो ब्यूरोक्रेसी एबळे हवा दरकार से एबळे हवा दरकार एमिति हवा दरकार समिति हवा दरकार ओके ब्यूरोक्रेसी ऊपर से बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन करछंती पेपर्स पब्लिश करछंती तंग लिखिछंती पब्लिकेशंस करछंती तो से कहया कथा कि बाहर जो एथिकल नॉर्म्स आउ मोरल्स अछि पब्लिक सर्वेंट पाखरे और ब्यूरोक्रेट पाखरे सेम एथिक्स नॉर्म्स तालिबो ना so basically he just eta kurunti the difference between ethics of public administration and ethics of कोन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और बाहर एथिक्स भीतर डिफरेंस टा से खाली कहउछन आ किछि नै it is not wise to apply to public administration the sort of moral and ethical norms which apply maintain personal conscience हमरो पब्लिक आउ प्राइवेट पर्सनल माने कोन पब्लिक आउ प्राइवेट एथिक्स बिषय डिफरेंस से कहउछंती या भितर गुटे हेल्दी डिफरेंस मेंटेन करिया पई वेबर कहउछंती ओके जोटा हम पई ठीक मे बी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सेटा ठीक न होइथै पारे ओके तो सेटा से कहउछन विथ एग्जांपल्स विथ ताकर जो किछिटा रिसर्चेस अछि से भी तो न गले भी हम किछ एग्जांपल माध्यम रे एटा बुझै परबा ओके
It is important to realize state bureaucracy might possess its own independent bureaucratic morality. जो state bureaucracy अच्छे कि public administration अच्छे सेटा तुम्हार personal conscience मोर जो निजर ओके प्राइवेट मोर जो पर्सनल माने कोन व्यक्तिगत जो विवेक अच्छे ताठो एटा अलगा बोली कहउचंती. फॉर एग्जांपल there is a situation हैला मते रखा गला कोठी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज फिशरी मिनिस्टर मत रखा गला फिशरी गुड अछि ना अछि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी मत रखा गला ओके मोर पर्सनल कंसर्न्स होचे मु नॉन वेज खाऊ नाही आई डू नॉट कंज्यूम फिश ओके किंतु मते कहवा गला कि एठी तमे कोन करिवो माछंकर एक्सपोर्ट बढ़ेबो ओके मते कहला और प्रोडक्शन ऑफ फिशेस तमे इंक्रीज करबो तो मोर पर्सनली वैल्यू कोन पूछी कि एनिमल को हार्म करवानी ओके एनिमल को मारिवानी किंतु पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोन पूछी तो फिशरी रे इंक्रीज प्रोडक्शन इंक्रीज करियार अछि हमरो फिश इकोनॉमी बढ़ेबार अछि. इज दैट अ डिफरेंस अछि कि नै मत कहला एथिकल नॉर्म भितर तांकर आ मोर पर्सनल कंसर्न्स रे डिफरेंस अछि जी हम बुझा उठा. Similarly मोर पर्सनल कंसर्न्स आउ एथिकल रे बहुत सारा डिफरेंसेस रहउची ओके इफ मो गोटे फीमेल ब्यूरोक्रेट हला तम भीतर अच्छा बहुत फीमेल्स अच्छा तमे कोन करिवो जेतबेले पूजा विधि हुए हला घरे के गोटे आसंती तमे कोन करो मुंडिया मारबे नै प्रणाम करो जे पुरोहित अछंती जे पुजारी अछंती किबा गोटे चर्च पूजा फादर को सामने रे तमे बो डाउन करछो कि जहा भी करछो हला गोटे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रे गोटे पब्लिक क्षेत्र थिला बेले यू आर सपोज टू नॉट डिस्प्ले योर रिलीजियस आइडेंटिटी किबा कोनोसी बिकॉज़ पब्लिक रे तमरो हजार रिलीजन अछंती हला समस्तनकर फेथ अलगा अलगा अछि यू कैन नॉट सपोर्ट ए पर्टिकुलर फेथ ओके तमरो एथिक्स टिक अलगा सेठी मु जदी चिट्टा काटी जीबी मु जदी गोटे मो रिलीजियस आइडेंटिटी को शोकेस अधिका करेबी ओके मो आइडेंटिटी इज डिफरेंट जदी मोर सेटा अछि कंटिन्यू दैट इज डिफरेंट बट जरूरी नुह कि मो रिलीजियस आइडेंटिटी को मु सेठी जाईकी एते परिमाण रे देखैबी कि लागिवो कि मु एटी रिलीजियन मो पर्सनल लगो मो पब्लिक को जोड़ा फील हबो तो देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन योर पर्सनल कंसर्न्स एंड एथिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खाली सेठी से कहउचंती या ऊपर गोटे बे बोलो केस आछि सुप्रीम कोर्ट कोन आछि जो जने माने मिलिटरी ये अछि से किंतु क्रिश्चियन से गुरुद्वारा भीतर को जीवाको माने मना कला देखो तो से ताको माने पादरी भी कहया परे कि एते तम पर्सनल रिलीजन किछि हार्म होनी तथा से मना कला कलानी भीतर तापर सुप्रीम कोर्ट माने ये करजे कि ताको एबे सेही बेसिस रे सर्विस रु ये करा जीवो निलंबन करा जता काहे ना पब्लिक सर्विस जतले करतो तले को रिलीजन ना तुम सुन लो सबरीमाला केस को माने सुनिछो सबरीमाला केस बहुत फेमस केस हे हर्ड अबाउट सबरीमाला केस की सुनछा तोटा ता विषय की जानिछ मते को टिके बेसिक जिंस की जानि सबरीमाला केस उतरे एनीवन नोज अबाउट सबरीमाला केस कोन कॉन्फ्लिक्ट कोन थिला सबरीमाला केस रे कॉन्फ्लिक्ट कोन थिला वुमेन मान को एंट्री करे को देउ नथले वुमेन मान रे एंट्री करि परिबे नाही हैला जे हमरा मान से भीतर जोड़े कि हमरा पर्सनल कंसर्न्स कहउची यस वुमेन माने एंट्री करि परिबे नाही किंतु सुप्रीम कोर्ट कोन कहउची सुप्रीम कोर्ट इक्वालिटी समझते ये माने एंटर करि परिबे कौनसी जेंडर पर्सन कौनसी एज रे पर्सन आ कौनसी समय रे से तार मासिक ऋतुस्राव रे थाउ कि न थाउ ताउ केही मना करि परिबनी मंदिर रे एंट्री करिया पई किंतु हमर कोन पर्सनल कंसर्न्स कोन कहउची आमे तो घर मान रे पीरियड्स तेला बेले पूजा भी करूना तार 2 दिन आगु 2 दिन पर 3 दिन पर्यंत पूजा करूना सप्ताह सारा आमे छुना यस और नो काका घरे सेमति नॉन सच्ची हाथ उठा समस्त घर सेबा नथिबो नॉर्मली जेतोला हम मेंस्ट्रुअल साइकिल थाए सेते बेले हमर जमार पूजा में करूना खाइबा रोसे कर दूर रोचन थाउ ना नॉर्म्स थाए हमर पर्सनल नॉर्म्स अछि सेमति रेज योर हैंड्स जदि अछि जानि सेमति कंसर्न समस्त घरे हम घर तो अच्छे तो समस्त घर थाए हम पर्सनल कंसर्न सेटा किंतु सुप्रीम कोर्ट जो गोटे पब्लिक ऑफिशियल से पब्लिक रो सेटा गोटे इट्स ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट हला एटा हमर गोटे अविच्छेद अंग हमर जोड़े जुडिशियरी तो सी कहला कोन
कि ना जे कोनोसी समय रे जे कोनोसी बयस रो जो कोनोसी महिला मंदिर रे एंट्री करि परिबो त के मना करि परिबो नाही इट्स ए केस सबरमेला केस सो ऑलवेज सब बळे सेमति ब्यूरोक्रेसी माने कोन जो माने की ब्यूरोक्रेट्स दे वर द सिलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर्स समान को एग्जाम दे कि ना समान को मेरिट बेसिस रे सिलेक्शन करा जाए ओके वेबर टॉक अबाउट मेरिट बेस्ड सिलेक्शंस ओके मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट स्किल तो से मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट द्वारा जो माने भी सिलेक्ट है कि पब्लिक सर्विस पाई कि ब्यूरोक्रेसी रे जाइछथि से मान को पाई कि डिफरेंट एथिक्स अछि एंड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द मोरल वैल्यूज ताको एग्जांपल से तो इनकलकेट करियार अछि आ हमु बुझियार अछि हला ए क्वेश्चन रो मीनिंग जति थिला Then last which rational and autonomous human beings are always treated ends in themselves but not as means. Explain this statement giving its implication for model technocratic society. Okay, so rational and autonomous beings are always treated as ends in themselves, not as means. Explain this statement giving the implication of modern technocratic society. तो এই কোশ্চেনটা টিকে अंडरस्टैंडिंग लेवल रो क्वेश्चन मील्स वर्सेस एंड्स को हम भल से बुझबा ओके रेशनल आ ऑटोनोमस बीइंग माने कोन बुझबा तापर एक क्वेश्चन टिके अधिक डीपली हम बुझ परिबा बट याको एबे डिस्कस न करेडा भलो कि ये उडे एप्लीकेशन आ टिके हाई लेवल रो उडे क्वेश्चन बट देखो ए क्वेश्चन गुडा कंपलसरी अछि आपको स्किप भी करि परिबो जणे हला याको मैंडेटरी लिखिया पड़िबो तो 20 मार्क क्वेश्चन गुडा देखो कंपलसरी क्वेश्चन में बहुत के टफ क्वेश्चन से देछि दीटा केस स्टडी देछि ओके गोटे तमर देछि वेबर विषय देछि आ गोटे लास्ट क्वेश्चन तुमको बुझिया पे देछि पूरा भीतर को जाई ना से अंडरस्टैंडिंग लेवल क्वेश्चन अछि आपको बुझिया डिफिकल्ट तो 100 मार्क तुमको ये डिफिकल्ट देला आ 150 मार्क तुमको इजी देला किंतु तब इंटरप्रेट करे पे डिफिकल्ट तो सती में ये सब्जेक्ट रो जत्ते तुम इन डेप्थ पसिनो सती बुझी परिबो नाही तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन दिस एथिक्स सेशन मु कोन करबी आई विल ब्रिंग यू सच क्वेश्चंस एंड आंसर फास्ट पढि देबा ओके बेसिक पढिबा मोर अप्रोच होची क्वेश्चन एंड आंसर रो केम पढिबा तो हमें बेसिक्स पढिबा बेसिक्स रो से पढिकिना बुझिबा कि एग्जैक्टली हमरो हमको कोन दरकार एग्जाम रे हमको पॉइंट उठी कि नबा देन हम कोन करिया रेगुलरली क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करिबा आई विल ब्रिंग यू इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो क्वेश्चन गुडा को एग्जाम रे आसुची आ से क्वेश्चन सॉल्व करि करि तुम बुझि परिबो कि एग्जैक्ट हम ए पेपर रे केमते अधिक स्कोर करि परिबा हैला कि बुझिलो म अप्रोच टा नाउ आई शोन यू द कोन देखिली तुमको मु व्हाट इज सेकंड रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखेली ओके आ तुमको एटा भी दिखेली यस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखेली ता संगरे मु तुमको दिखेली सिलेबस दिखेली किंतु हमें से सिलेबस रीडिंग तो तुमको YouTube रे मिलुची YouTube मार दो सब सिलेबस आसीबो कि नहीं एथिक्स पूरा सिलेबस आसीबो YouTube रे पूरा पाठ पढाई थे किंतु एग्जाम को केमते अप्रोच करबा मु से डिफरेंस एट पढेबी ओके दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू कि एग्जाम रे ए जो पर्टिकुलर क्वेश्चन गुडा अछि से क्वेश्चन केमते अप्रोच करबा और मैक्सिमम स्कोर केमते करि परिबा ओके जो प्रॉब्लम पिलांगर होउची कि एथिक्स रे आसु लिमिटेड मार्क एथिक्स रे आसु 120 180 90 समस्त 120 125 130 किंतु कोन डिफरेंस करि परिबा कि आमे जो एक्स्ट्रा 25 मार्क नै आसबे एथिक्स रे सेटा आमे इठी पढिबा तो आज वाइंड अप करिया पूर्व खाली कल टाइम पढिबा पर सब्जेक्ट पढिबा सब्जेक्ट सहित हमें अगेन क्वेश्चन एंड आंसर कैन सॉल्व करबा ताको बुझिबा हला आई विल टेल यू द पॉइंट आई विल डिक्टेट यू आई विल राइट यू ताको देखि त बुझि परिबो कि यार अप्रोच टा एवढे हबो सिमिलरली जो ता पूर्व वर्ष फर्स्ट टाइम जो एथिक्स इंट्रोडक्शन है पिला हमर क्वेश्चन थिला एक्सप्लेन द मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स एक्शंस विथ सुटेबल एग्जांपल्स और सब और क्वेश्चन थिला दीदी रे क्वेश्चन लिखा दिथिला सिधर गोटे गोटे लिखिबा थिला फर्स्ट ईयर जेतु एथिक्स इंट्रोडक्शन हेतिला हम टिके से लिबरल करथले पेपरटा एबे स्ट्रिक्ट कला नेक्स्ट ईयर आसीबा अहरी इन डेप्थ पचरिबो से हमको तो जति हम प्रिपरेशन से बडा करबा हला एग्जाम ने मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स ऑफ एक्शन एंड यूज सुटेबल एग्जांपल एटा डायरेक्ट सिलेबस टॉपिक उठे दिचे हमें टॉपिक गुडा भल से करबा हला आ तमे लिखियो समस्त पेन पेपर और एथिक्स रो जो कहथिली जीएस वाला 4 वाला नोट रखि था एथिक्स रो जहा जहा डाकिबी सेति की लिखो आ जहा जहा पॉइंट डिस्कस करबी से पॉइंट गुडा लिखो मिनिमम एफर्ट रो के मैक्सिमम रिजल्ट बाहर करबा सेटा होछ हम टारगेट ओके explain specific ethical practices in the personal, organizational and public spheres and practices that are binding in all spheres by citing examples of great administrator किछटा great administrator मान एग्जांपल लेकिन तुमको लिखियार अछि देन तुमको असला
Integrity is an all-inclusive. Elaborate on it. Mention all type of integrity and their constituents as relevant to public servants. Provide appropriate examples as required. Similarly, normative ethics is universal and prescriptive ethics is contextual. In this context, explain how the former act as principles of the latter with suitable instantiation. देखो normative ethics आउ prescriptive ethics कौन आम एटा पढ़ी नांदी आम बुझी पारि नेबे आउ की काटा just it's a comparison the principle भितरे ताको आम पढ़ले जे बुझी परिबा. Discuss the major aptitude indispensable for a good civil servant with suitable examples, or explain how a proper and balanced blend of attitude and aptitude can make one successful administrator. India has a diverse culture and people and many lives live under terrible conditions. To deal with their situation and progress, sketch out the model and a model of empathetic and compassionate governance. Or Utpal Mani Gopal Das was a social reformist who personified morality, tradition, or modernity with emotional intelligence. Explain. Then Immanuel Kant has given 3 formulations of categorical imperative as the following: act so that the maximum of your action should become universal law. Treat humanity in every case as an end in itself, never as a means and only. Every rational person is both subject and ruler of the kingdom of the ends. Explain the 3 contexts in the context of civil servants. Hela eta हम बुझिया पे पढ़ियो पूरा philosophy of ethics. Then हमर गला with examples illustrate both positive and negative sides of consequentialist ethics if exclusively followed for governance. Consequentialist ethics कोन हम जान ले जाके एटो अप्रोच कर परिबा. Then we will discuss Aristotle's notion of virtue ethics and how it is conducive to private organization and public transactions. Aristotle ର virtue ethics पढ़िया में पढ़िया हम philosophy of ethics रे देखो केते application based question आछे तो हमको ताको जते डिटेल रे बुझिबा सेते भला हम अप्रोच कर परिबा. Discuss the ethical dimension associated with the utilization of public fund. Okay, public fund utilization में कौन ethical dimensions follow करे तो लिखिया है direct question. What are transparency and right to information adapted for the administration? Explain. RTI विषय question आछे प्रति वर्ष. It is often found that some of the constructions at public places like bridges and flyovers break down at the stage of half construction or immediate completion. They are obviously due to corruption. In this context, analyze the lack of moral integrity, improper attitude, and constraints that lead to corruption, and simultaneously suggest the preventive steps involving accountability and transparency. ताको हम बुझबे क्वेश्चन रे. Then इडे भी हमको corruption विषय पचरा है छि आउ टिके लेंदी क्वेश्चन अछि याको केमिति अप्रोच करबे से अप्रोच ताको हम बुझबा. Then explain the moral obligation based on which the corporate responsibility is fixed. Okay. Then ahimsa, satya, asteya, brahmacharya for the divinity over lust. Brahmacharya, apariharya, aparigraha are 5 virtues accepted by many systems and they are regarded a common moral virtue. अच्छा मत कहलो ए 5टा virtue कहारो एटा philosophy? How can a public administrator adopt them for doing his service to the public? Explain. अच्छा अहिंसा, सत्य, आस्तेय कहार? बुद्धिज्म की कहबो एटा कहार philosophy? ना जॉइनिज्म ब्रो. Jainism philosophy है indirectly Jainism philosophy सर पचारछि ताको explain करिया. Sometimes due to empathy, a humanistic attitude and dedication to public service, an administrator is likely to think to blend the rules and become lenient a little, which could legally help a person. However, to be humanistic, adopting empathy and dedication to public interest are moral, but blending the rules and being lenient to is illegal. Okay, explain this dilemma arising here and try to resolve it. देखो क्वेश्चन रो रेंज देखछ केते डिफरेंट टाइप रो क्वेश्चन तुमको से दोछ सेटा हो चैलेंजिंग ए सब्जेक्ट रो कि 100 बहुत टाइप रो क्वेश्चन दोछ जोरा लागले हम अप्रोच करबे सो जीएस एसए टाइप रो आंसर हे जीवो किंतु हम एथिक्स रो स्टैंडर्ड रो के आंसर केम लिखिबा सेटा हम बुझबा ए पैच रे. Then evaluate the reformative administration of Sardar Vallabhbhai Patel, the first Home Minister of independent India, highlighting his moral integrity, attitude with suitable instances. देखिलो Vallabhbhai Patel विषय भी आसिला गोपबंधु दास विषय आसिला क्वेश्चन पुनी ताकर एथिक्स ताकर कोन इंस्पायर हले से विषय पचरा. They both are okay leaders. Our independent
मूवमेंट लीडर भी सेमाने आ भारत रो political leaders भी समान को विषय क्वेश्चन great people समान समझते हैं. Then protocols and code of conduct are prescriptive. However, most of them these are based on some cultural and moral values and norms. Explicate these values and norms with appropriate instances. Okay, then how can a subordinate district level civil servant maintain impartiality and dutifulness to adapt by adopting perfect attitude and aptitude while working with hostile political and administrative subordinates and misinformed public? Explain with suitable examples of situations. Okay, तो यही टाइप ऑफ क्वेश्चन को अप्रोच करने पे वी हैव टू डेडिकेट टाइम, वी हैव टू फॉलो, हमको पूरा ब्लाइंडली पूरा डेडिकेटेडली फॉलो करिया ପାଇଁ पड़िबो जहा जहा हम पढौछि ताहले जाकी एवढा क्वेश्चन को तमे अप्रोच करि परिबो आ तमे प्रैक्टिस करिया पड़िबो. जेमिति मु जीएस रे लिखिया ପାଇଁ दोछि आई विल गिव यू फ्यू क्वेश्चंस ताको लिखिया ପାଇଁ पड़िबो, प्रैक्टिस करिया ପାଇଁ पड़िबो ताहले जाकी तमे आइडियाज आसीबो ऊपर केमति लिखिबो हला विद इन स्पैन ऑफ सम 2 मंथ्स और जति टाइम मिलला हम टाइम ट्राई करबा एथिक्स रे हमें गोटे भल लेवल रे स्टैंडर्ड बिल्ड करि परिबा सो दैट हमें आंसर राइटिंग सिंपली करि परिबा. द एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक लाइफ वर एक्सपेक्टेड टू बी सैटिस्फाइंग इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया. हाउएवर द सिचुएशन इज वर्सनिंग इन सम स्टेट्स. फाइंड द मोरल एंड एटीट्यूडनल एक्सप्रेशन thereof and suggest how the situation will improve. एटा करंट अफेयर ऊपर, कंटेम्पररी अफेयर ऊपर, इंडिया पॉलिटिकल सिस्टम ऊपर ए सब को नै गोटे क्वेश्चन बना है पुणी ताको एथिक्स आंसर बोली हम लिखियार अछि. लास्टली हम गोटे केस दिया बहुत लंबा केस तो नुह ये गोटे लंबा क्वेश्चन ये होछि हमरा. देयर वाज अ यंग सिविल सर्वेंट नेम्ड वांगचू. ही वाज वर्चुअस एंड जस्ट. ही हैज द राइट एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड बट द ओनली थिंग इज दैट ही नेवर ब्लेंड टू इलीगल एंड मोरल पीपल and their actions. He faced them as he used to take action against them directly or indirectly. For this, he suffered from the atrocities of them and their appointed hooligans, corrupt politicians, okay, and officers and misinformed people. He was harassed and emotionally tortured, physically assaulted, offended, degraded many times. And transferred with intermediary suspensions all over his life. All this happened because he could not go with corruption and corrupt people, and he adopted Gandhian simplicity, silent suffering and prayers. After retirement, he got some time to read about the Krishna of Mahabharata. He came over the passages describing Krishna's valor, tactics, diplomacy, love, dutifulness, etc. in all peace and or conflict situations. In the light of Krishna's action, he analyzed his moral uprightness and actions and all his misfortunes. At last, he found only 2 things that he could not adopt, as Krishna did in similar situations. Then he thought to give a trial in adopting the same. For this, he contested the election, adopting these 2 things that he missed out on and got success not only in the elections but all through his life, secured prominent positions and removed the corruption as far as he could. His lifelong sufferings and moral also paid off, making his image brighter for the public. Based on the story, he recognized the strategy and the 2 things that Krishna adopted, but Vangshu missed out on all previous situations as he was an administrator. Imagine the situation of each of his atrocities and suggest what course of action Vangshu could better adopt in those situations. देखो एठी कोन हला वांगचू गोटे पब्लिक सर्वेंट थिला, ऑफिसर थिला, से रिटायर हे गला किंतु चाकरी काल से बहुत गांधीयन प्रिंसिपल अवलंबन गला जो द्वारा कि ताको बहुत एट्रोसिटीज फेस करिया पे पड़ला, बहुत डिफिकल्टीज ताको फेस करिया पे मिलला. शारीरिक निर्यातना दिया होतला, निर्यातना होतले ए सब जिंस अपमानित करा जातला. रिटायरमेंट पर से पॉलिटिक्स जॉइन करले आउ से महाभारत पढुचंती, कृष्ण को एथिक्स पढुचंती. तो से कृष्ण को किछि जिंस सिखिले ता केमते अप्लाई करबे आ कोन कोन से करि पारि थानते सेटा से पचारु. तो देखो एठी तुमको महाभारत रामायण विषय में तुमको बुझाय पे पड़ियो. तो आमे सेशन रे
ताकू भी आमे पूरा गोटे ऑलराउंड आमे एनालिसिस करबा यस इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम ऑल ऑफ द एथिक्स बैच जो क्लासेस हम कुछ पढुचंदी कोठी माने नॉर्मली जो एथिक्स हम YouTube रे पढुचंदी कि आमे डिफरेंट बैचेस रे पढुचंदी इट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दोस बैचेस बिकॉज़ माय अप्रोच इज टुवर्ड्स मैक्सिमाइजिंग द मार्क्स ऑफ इंडिविजुअल मार्क मैक्सिमाइज करिया पई केते डाइवर्स आंसर लिख परिबा केते ऑप्टिमम और बेस्ट आंसर लिख परिबा ताकू अप्रोच करिया दिस इज द बेसिक डिफरेंस हला ओरिएंटेशन मीनिंग हला हमें क्वेश्चन आंसर नो बैच इन दिस वर्ल्ड हेजी जोड़ा कि क्वेश्चन आंसर को अप्रोच कला बळे हेजी तो हमें से डिफरेंस टा करबा एंड एथर जो मान दोचो ओनली 200 पोस्ट्स हला 200 पोस्ट रु हमरो ओएस पाई भी बहुत ही लिमिटेड पोस्ट अछि इन दोस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट और नेक्स्ट टाइम भी ओएस पोस्ट बहुत लिमिटेड ही बाहरुछि मु सुनिया माइले 20 30 टा पोस्ट टोटल बाहरुछि ओएस रु जानी आई डू नॉट नो बट सुनिया मिलछि तो से भितरे पूरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ना पाई बोली कि ना हम आंसर सेते बेटर आ ऑप्टिमाइज आंसर लिखिया पाई पड़िबो सो प्रिपरेशन तुम जहा करछु करो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स तुम वर्तमान होलिस्टिक प्रिपरेशन करे दरकार ईच एंड एवरी पेपर ऊपर तुम प्रॉपर कंटेंट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आउ तुमरो प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग बहुत इंपोर्टेंट तबे जाय कि तुम एग्जाम रे गोटे बेस्ट स्कोर कर परिबो इन दिस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मु एठी जोरा पढौछि हुए तो आउरी सेमति छोट छोट बैच करी बहुत सारा पाठ पढुते पिला एग्जैक्टली इते न पढुथाई पारंते बट किछ बड़ लेवल रे अछंती बहुत सारा इंस्टीट्यूशन पढौचंती तो यू जस्ट थिंक बाकी मानो को टू एडवांटेजेस रहबार अछि बाकी मानो टू बेटर पोजीशन करबार अछि बिकॉज़ इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तो पब्लिक सर्विस सर्वेंट हवा पूर्वरु यू नीड to clear the examination okay तो ताकू नजर रखी कि हमें पाठ पढिया आ हमें डेडिकेट करबा हमर सेकंड हाफ जंती को ऑप्शन आ एथिक्स को फर्स्ट हाफ जीएस ऑफ एसए ओके सो दिस इज हाउ वी विल रीड बुझा पला समस्त हम अप्रोच कोन रहबो सो एथिक्स पेपर hela will be very very crucial to decide you whether you are in the final list or not hela everybody is scoring an average score but हमको स्कोर करिया अछि बेस्ट स्कोर hela ता पय पैरामीटर्स रहला अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट सेकंड होछि हमरा डाइवर्सिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग और थर्ड होछि राइटिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थर्ड नो फर्स्ट मु कहबी किंतु हमें बुझले ही डाइवर्सिटी कल ही लिखि परबे आंसर को हला तो देयर आर लॉट ऑफ एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग अब हमें अप्रोच भी से बड़ा करिया हला विथ पेशेंस विथ कंसिस्टेंसी वी विल लर्न थिंग्स तो आज में एति की हला वी विल डिस्कस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस यार आंसर डिस्कस करबा ओके वी विल गिव टाइम जते अधिक दरकार पड़े सते बसिबा हमें फिगर आउट करबा देन हमें आगु बढ़िया ओके सो एटा होची एथिक्स बैच काली जीएस रे हमें स्टार्ट करबा हमरो बाकी तीन जो क्वेश्चन गुडा रही क्वेश्चन डिस्कस करके हमें स्टार्ट करबा एग्रीकल्चर तो मोरलेस हमें आजकल क्वेश्चन काली केतरा करले बट एग्रीकल्चर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम अप्रोच करबा ठीक बुझिबा ए वीक रे हमें एग्रीकल्चर और साइंस को कवर करबा वो टेस्ट भी तार करबा असाइनमेंट भी देबी होला काली हमें एग्रीकल्चर स्टार्ट करबा तार भी असाइनमेंट देबी तापर हमें रहला हमरो इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट को हमें आउ किछि दिन रे कवर करबा सेति सरला पर हम जीएस 1 2 3 बेसिक्स पढछन आ जो बेसिक रह गेला आ ये प्रिपेयर हो गेला थ्योरी गुडा ताको डिस्कस करबा जीएस बैच रे हला आ एथिक्स बैच रे हमें एथिक्स को और भल से देखिबा आ दिन 11 रु ट्राई करबा हमें जल्दी जल्दी सारिया पे तरबरिया हल हम जिंस हमें केमिति सब पूरा बुझियो सेटा हम देखिबा हला ओके सो थैंक यू एवरीवन with this take care समझ